नाजरीन सामीन, वुलर टेलीकास्ट के इस प्रोग्राम में जावेद इकबाल आपका खैर मकदम करता है। नाजरीन सामीन, कहते हैं कि हर एक मुल्क, हर सोसाइटी और हर एक माशरे की सेहतमंदी, उसकी फलाह बहबूद और उसकी तरक्की का जो राज है वो बहुत सारे अवामिल में शामिल होता है, जिसमें उस माशरे, उस मुल्क, उस खित्ते और उस सोसाइटी की मईशत, वहाँ का तहजीब व तमद्दुन, वहाँ की सनत व हिरफत, वहाँ की इक्तिसादियात एक अहम रोल अदा करती हैं। लेकिन हर एक माशरे में ये ज़रूरी है और सबसे पहले जिस चीज़ को अहमियत दी जाती है वो तालीम है और तरबियत है। तो तालीम और तरबियत का जो हिस्सा है वो एक माशरे की फलाह व बहबूद और उसकी सेहतमंदी में सबसे ज़्यादा और एक अहम रोल अदा करता है। जम्मू कश्मीर का खिता भी कोई अलग खिता नहीं है। वहाँ पे भी तालीम व तरबियत के हवाले से बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन बज़ात खुद जो तालीम व तरबियत का ये मैदान है, ये एक बहुत ही वसी मैदान है और इस पर बात करने के लिए हमें एक प्रोग्राम नहीं बल्कि कई प्रोग्रामों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तालीम व तरबियत के हवाले से एक ऐसा शोबा, एक ऐसा एस्पेक्ट निकलता है जिसे हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। इसे कुछ लोग उन अफराद की तालीम व तरबियत का नाम देते हैं कि जो डिफरेंटली एबल होते हैं। कुछ लोग इसे एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड कहते हैं। आप नाम कुछ भी दे दें, लेकिन आज हमने ये देखना है कि इस हवाले से जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स और स्पेशल एजुकेशन का एक पहलू है, ये हमारी रियासत आज जो कि यूनियन टेरिटरी बन गई है, जम्मू व कश्मीर में कहाँ तक कामयाब है, इसमें क्या हुआ है, क्या होना बाकी है और क्या हो रहा है, इस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले मैं आज आपको अपने मेहमान गिरामी का तारुफ कराता चलूं, जो इस सिलसिले में आपसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और हमें मुख्तलिफ पहलुओं पर इसकी रोशनी इस पर डालेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं जो मानव रचना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जनाब शरव आनंद। मिस्टर शरव आनंद, आई वेलकम यू इन माय शो। आपका खैर मकदम है। आप जम्मू से ताल्लुक रखते हैं और जी दिल्ली सर। की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मेरे साथ जो मेहमान है, जो पैनलिस्ट हैं, वो प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला रैना है, जो एक एजुकेशनिस्ट हैं और तालीम और तरबियत से इनका राबिता रहा है, बहुत राबिता रहा है। कश्मीर के अंदर भी इन्होंने काम किया है, वहाँ पे भी टीचर ट्रेनिंग के साथ वाबस्ता रहे हैं और बरतानिया में भी तकरीबन ज़्यादा से मेरे ख्याल में 20 से 25 साल तक शोबे तालीम से वाबस्ता रहे और स्पेशल एजुकेशन के हवाले से बहुत काम किया है। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे इस प्रोग्राम में तशरीफ ले आए। शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू। मेरे तीसरे मेहमान जो हैं वो जनाब खुर्शीद अहमद मलिक साहब हैं। खुर्शीद अहमद मलिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, श्रीनगर से इनका ताल्लुक है। IAS ऑफिसर रहे हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी भी रहे हैं, बहुत ओहदों पे फाइज रहे हैं। बदकिस्मती से एक कार हादसे में व्हील चेयर बाउंड हो गए हैं। एक इदारे के साथ वाबस्ता है श्रीनगर में, उसके सिलसिले में इनसे हम बात कर लेंगे कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं और किस तरीके से वो चाहते हैं कि इस काम को आगे लिया जाए। जनाब खुर्शीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे साथ एक और मेहमान हैं जो कश्मीर के बिजबहाड़ा इलाके से ताल्लुक रखते हैं, जनाब जावेद अहमद टाक साहब।
जावेद अहमद टाक साहब, आप वहां पे ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट क्या चला रहे हैं, उससे वाबस्ता हैं। ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्पेशल एजुकेशन नीड रखने वाले अफराद की लुक आफ्टर करता है। इनसे बात कर लेंगे और इनसे पूछेंगे कि वो किस तरीके से इस सिलसिले में काम कर रहे हैं और आगे उनके क्या प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद एक बड़ी ही अहम शख्सियत जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं, जनाब मोहम्मद यूसुफ गनाई साहब, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के डीन सोशल साइंसेज हैं। इन्होंने स्पेशल एजुकेशन के हवाले से बहुत काम किया है और काम कर रहे हैं, और हायर एजुकेशन में इनका स्पेशल नीड के हवाले से इनका क्या रोल रहा है, ये क्या समझते हैं कि इसको किस तरीके से मुनज़्ज़म व मजबूत बनाया जा सकता है, उनसे बात कर लेंगे। और मेरे साथ हमारी एक बहन जुड़ गई है श्रीनगर से, ये शफकत गिलानी साहिबा है। शफकत गिलानी साहिबा एक ऑटिज्म बच्चे की वालिदा हैं, जिन्होंने अपने आप को डिवोट किया है अपने बच्चे की फलाह व बहबूद के लिए। और उसके साथ साथ सुनने में ये भी आया है कि वो श्रीनगर में एक इंस्टीट्यूट भी चला रही हैं, और जहाँ पे वो इस किस्म के बच्चों की तालीम व तरबियत और उनकी फलाह व बहबूद में काम कर रही हैं। उनके साथ बात करेंगे और वो एक पेरेंट की हैसियत से और इस इंस्टीट्यूट को चलाने की हैसियत से भी बात कर लेंगे। मेरे साथ शफकत साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इनविटेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ जनाब अंजर मौजू साहब हैं। जनाब अंजर मौजू साहब बारामूला से ताल्लुक़ रखते हैं। अंजर मौजू साहब बज़ात खुद एक डाउन सिंड्रोम बच्चे के बाप हैं, एक वालिद हैं, और जानते हैं कि इस किस्म की इन बच्चों की तालीम व तरबियत, इनकी फलाह व बहबूद, इनकी देखभाल के लिए इनके पास क्या चैलेंजेस हैं। जनाब अंजर मौजू साहब एक पत्रकार भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, और उसके साथ साथ जम्मू व कश्मीर डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन के मेंबर हैं, जो ऑल इंडिया डाउन सिंड्रोम ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता है। उस सिलसिले में इनसे बात कर लेंगे। और सबसे पहले मेरी गुजारिश तमाम पार्टिसिपेंट से ये होगी कि वो सिर्फ 3 मिनट की एक फिल्म देखें और उसके बाद हम ये सिलसिला आगे जारी रखेंगे। Everywhere in the world, it's difficult to be different. The impairments of people with disabilities makes them different from others, so they are always looked upon differently. There are hundreds of different disabilities, and there are as many causes for these disabilities. Elsewhere, Kashmir has had its share of negligence towards its people with disabilities. Amid the darkness of despair, a ray of hope came from the Voluntary Medicare Society, a medico-social voluntary organization dedicated to the care, treatment and rehabilitation of physically and mentally challenged. Founded in 1970 by Dr. Mir Muhammad Maqbool, retired professor and head of the ENT department, Government Medical College, Srinagar, along with the support of few friends, the Voluntary Medicare Society has dedicated itself to improving the physical and social well-being of people with disabilities. Today, it is considered as an important component of the society, the first and so far the only in Jammu and Kashmir, equally capable of discharging important and challenging responsibilities. VMS today runs the Shafaqat Special School for Special Children and the Shafaqat Rehabilitation Center for physically and mentally challenged persons, especially the patients with spinal injuries. The special school is one of the benchmarks of the organization, established in the year 1995 for physically, mentally, speech-related services in the year 2000. At Shafaqat, physically challenged people and children with below average intellectual abilities feel enabled and look confident. The change in body language contradicts the traditional image of a person with disability.
The objective of the institution is to meet the unique needs of such children, which otherwise are difficult to meet in the existing regular school. The services available at Shafqat School are physiotherapy, provided to children with physical impairments and restricted mobility using different manual and mechanical techniques and aids. Occupational therapy, provided to assess the functional abilities and limitations of the child. Auditory and speech training. It utilizes certain manual and technical devices to develop listening skills and impart training for appropriate speech production. Basic reading and writing skills. Training for activities of daily living. And other related sections. Vocational training courses for enrolled children above the age of 14 years, but the trained professionals so as to enhance their earning and productive skills. The first step to set up an inclusive school for special children in Kashmir has been taken, and the government has recognized The Shafqat Rehabilitation Center was established in 2006. It has the distinction of being the only center in Jammu and Kashmir where all the facilities for physically challenged persons are available under one roof. The gymnasium opened in 2012 with the aim of providing a professional alternative to local commercial gyms. The center is owned by Voluntary Medicare Society and operated by physiotherapists and by trained exercise physiologists. A separate P&O department was added to the center with the help of ICRC, where free of cost artificial limbs of international standard are provided to the amputees. The patients are also provided free transportation and accommodation and the services of an attendant. Through the Assistive Technology Department, wheelchairs, crutches, and other assistive devices are provided free to the patients. Counseling for the patients is also available at the center. आपको मेरी आवाज आ रही है सबों के पास? जी 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 जी। और ये जो वीडियो है ये पॉज हो गया है या फिनिश हो गया है? नहीं, आई थिंक it's finished. फिनिश हो गया। अच्छा, ये फिनिश हो गया है तो आप I can't really understand what has right. Okay, now अभी आपको मेरी आवाज है। Right, अभी आपने ये देखा, ये I'm sorry कि आपको ये जरा थोड़ा सा इसमें इंटरनेट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ी देर के लिए इंतजार करना पड़ा। तो मुझे यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं कि ये वीडियो अब खत्म हो चुका है। खैर, आप लोगों ने ये वीडियो देखा तो सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी जनाब खुर्शीद साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं खुर्शीद साहब? जी 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 खुर्शीद साहब, आपसे सबसे पहले मेरी गुजारिश ये होगी कि आपने ये वीडियो देखा, आप ही के इदारे का वीडियो है, और मैं बाकी जावेद साहब से और बाकी हजरात से माजरत चाहूँगा क्योंकि उनके वीडियोस हमारे पास जो पहुँचे बहुत ही लंबे थे, जिनको हम उस तरीके से उसको एडिट नहीं कर पाए थे, लेकिन इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में चला देंगे। जनाब खुर्शीद साहब, आप हमें ये बताइए कि आप इस अपने इंस्टीट्यूशन के हवाले से आपको क्या लगता है कि कौन से चैलेंजेस हैं जो आप इस स्पेशल एजुकेशन नीड के ज़िम्मे में आते हैं और इन पे काम करने की ज़रूरत है, और जो कुछ आपने इस इंस्टीट्यूशन के हवाले से किया है उस बारे में ज़रा हमें थोड़ा सा बताइए जनाब खुर्शीद साहब। Sure. Inshallah, I will try my best to show that what the government is doing for inclusive education, and in comparison to what we are doing as a model school at Voluntary Medicare Society. Slightly,
we go back to the history of the inclusive school. It was the World Conference held way back in Spain, 1994, where the concept of inclusive school was given. Subsequently, in 2000 in Senegal, this was rectified and signed by Government of India. As we know, it's the same quality basic education which is also given in our constitution. In 2003, Sarva Shiksha Abhiyan, I can't pronounce it properly, SSA was introduced in J&K. I will quickly go through it. In 2003, it was for elementary from age 6 to 14, and it was simply that all physically challenged will go to regular schools. There were no separate components like except special educators, no resource persons, and all other things which were later on added. This scheme in 2008 and 2009, which was separate when the Soranga, what we call Soranga Shiksha Abhiyan and Ramsa was combined together. That was based on the survey conducted in 2007-2008. Government of India conducted that survey throughout country, wherein 20 lakh children with disabilities were identified. Out of 20, 15 lakh were enrolled. And so far as Jammu and Kashmir is concerned, there were 35,653 identified, and then 22,402 were enrolled. So there remained a gap of about 10 to 12,000. But then the survey keeps on going almost every year with whatever little survey staff they have. Unfortunately, right from that beginning to this day, they have functional staff. They are all either on contract basis or stipend. If you looked at the structure, what they have, the structure is like this, if I have correctly understood it. They have a resource officer per district 2, except Jammu and Srinagar, where we have 4 each. And then they have zones for the zonal education officer. And each zone has then the clusters. The clusters are divided as per the number of the schools in a zone. And at the level of at zone level, we have the resource officer. And then at the cluster level, we have special educators who have to take care of all the schools which are working under it. I think around eight clusters are given to per zone. Anyway, after this, the problem with they have at the moment is, if, for example, I just give you the example of Baramulla district. The Baramulla district has identified, as on date, 6,850 disabled children. This is the maximum in the state. Maximum. Enrolled 2,490. So there is a gap of around 3,000 plus. Right. 3,000 plus enrolled in the schools. And they have special educators, only 4, with 2 resource persons. Each special educator, the resource officer gives a roster. According to the rosters, they take these children to the resource room, which is one resource room in one zone. अब अगर 2,490 को इनको लेना है, who have enrolled, तो ये कब बारी आ जाएगी, कितनी देर में बारी आ जाएगी, और 4 स्पेशल एजुकेटर्स क्या कर लेंगे इस सारे में. और बारामूला में देयर आर 18 zones है वहाँ. So this is a huge task for 4 education. First, let me tell you that there are about
112 posts sanctioned of these special educators. Only 54 have been 118, and only 54 are in place. अब खुर्शीद साहब आपको मैं यहाँ पे जरा थोड़ा सा कत्ता कलामी माफी चाहूंगा. ये जो पूरे आप हमें फिगर्स बता रहे हैं, इन फिगर्स के हवाले से एक तो आपने बिल्कुल ग्रिम पिक्चर बता दी कि 6,850 आइडेंटिफाइड ऐसे तलबा व तालिबात हैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, और उनकी देखभाल के लिए सिर्फ 5 या 6 आदमी हैं. इस पे हम बात कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस इंस्टीट्यूशन से आप वाबस्ता हैं, आप खुद एक रहे हैं, हुकूमत में रहे हैं, एक अच्छे ओहदे पे फाइज रहे हैं, तब से लेकर आज तक आपने बहैसियती एक ऑफिसर के, बहैसियती हुकूमती मशीनरी के एक पुर्जे के, क्या आपका रोल रहा है कि इस सेक्टर में काम करने का, और उसके बाद जब आप रिटायर भी हो गए और आज आप इसे वाबस्ता हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उसमें और इसमें किस हद तक का फर्क है? It's a very good question. As and when I got the chance while serving, I retired in 2006, I would speak about it. Right. Farouk Peer was the first director appointed in 2003. Then he was given extension for another 3 years because of his good and honest work in that. He would often speak about it to me. And my answer to whole problem, ये जो सारा structure बना दिया गया है, I will just explain it with what we are doing at special school in voluntary Medicare society with examples. As जिसको ये कहते हैं parameters and barriers, उनको कैसे हमने cover कर लिया, और ये जो inclusive school का conception है, which was started in the West. अगर West की कोई भी website आप देख लीजिए, वहां पर भी कोई भी parent अपने normal बच्चे को नहीं बिठाना चाहेगा with the special children. किसी जगह पर नहीं बिठाया जाएगा वो. They hesitate. Question यहाँ पर तो ज्यादा ही मुश्किल है. We have not succeeded in bringing a normal child sitting with a disabled child, particularly if the disabled child is mentally retarded. And we in special school at voluntary Medicare society are mostly dealing with mentally retarded because they are not taken in the government जहाँ पर भी जो भी कुछ जहाँ पर भी जो भी करना चाहते हैं, they prefer physically challenging. May that be in a wheelchair और कुछ भी, जिस तरह से उस पे parents अगर interested है वहाँ पर तो लाएंगे. They have normal IQ, they progress. But mentally retarded, yes, it's a challenge. If you just give me a little time about what we are doing, simultaneously that can tell you, ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया गवर्नमेंट लेवल पर क्या है, इस पे हम खुर्शीद साहब बात कर लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं. मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा. आपने तो एक अच्छी पिक्चर हमें बता दी है कि क्या है. यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला रैना साहब को. जनाब प्रोफेसर साहब, आपने जनाब खुर्शीद साहब को सुना. उन्होंने जो तस्वीर हमारे सामने पेश की है वो इंतहाई बिल्कुल अफसोसनाक भी है, और एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने आई है रियासत के हवाले से. आप एक माहिर तालीम हैं, आप टीचर ट्रेनर भी रहे हैं, और आपने स्पेशल एजुकेशन नीड में न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि बरतानिया में रहकर भी एक अच्छा खासा नाम कमाया है. आप क्या समझते हैं कि कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से आप इस को कैसे देखते हैं, और जम्मू कश्मीर के तनाजुर में आप स्पेशल एजुकेशन नीड्स को किस तरह से देखते हैं, और क्या समझते हैं कि इसमें क्या करने की जरूरत है, और खुर्शीद साहब का जो पिक्चर है उसको जहन में रखते हुए इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए. जनाब प्रोफेसर साहब. जावेद साहब, ये मलिक साहब ने जो फरमाया ये बातें हुई है बाद में. मैं समझता हूँ इतना भी जो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट लेवल पर हुआ रहा है, आई एम सरप्राइज्ड दैट दिस हैज हैपेंड. आई हैव वर्कड फॉर 25 years with the teacher training in Kashmir, in College of Education, State of Jharkhand, and Directorate of Education. I have certain times recommended it.
even I will, I should not have said, but I will say, when I talked to a minister about it, about this project, he said, "Ha, you can INS watan to human karai zakat." This was the attitude. In our time, when I was in teachers' college, or I was dealing with the teacher education in Kashmir, there was nothing said about it. And I believe still, as Khurshid Sahib himself said, for 600 and some children, there are 4 specialist teachers. And I doubt whether they are perfectly specialist teachers. There is no training program for the specialists in special education in Kashmir. We believe here in UK, any child has special needs if his learning problem or disability that makes it difficult for him to learn, and that most of the other children of his age, he has a problem, whether physical or mental, whether moderate or severe, he needs a special treatment, a different curriculum, an individual plan for him. And parents whose children they deserve all kinds of support and advice from specialist teachers, volunteer organizations, and the administrators, or those institutions who are dealing with different disabilities. And therefore, all children, when we talk of, we say our basic principle education is all must have access to education, equal opportunity. We don't talk only about the gender equality. We also include in it the disability, the disabled children, the disabled people who are of the school age should be given equal opportunity and equal access to the curriculum. So here it's a different thing. It's difficult for the circumstances of Kashmir, or the situation in which we are, to compete their position with the position in UK. But as per my knowledge, this sector has not been treated well. We are spending hundreds of crores and billions of rupees on the development, on the opening of schools which are not needed at all. At every 2-3 miles, there is a high school. At every 8 miles, there is a college with no equipment, with no accommodation, with no requirement, the professional staff. We are spending on those sectors where we don't need. But this sector, we have mostly neglected. This is an important sector, and these children who have disabilities, they deserve equal treatment as the normal children. Khurshid Sahib raised a basic point that those who are mentally disabled children, the parents of the normal children don't want them to share the same classroom, which necessitates special schools. We need special schools for mentally disabled children. Right, Professor. प्रोफेसर साहब यहाँ पे मैं आपको, जब हम बात कर लेंगे कि दैट वी नीड द स्पेशल स्कूल्स, इस पे हम बात करेंगे, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा जनाब मोहम्मद यूसुफ गनाई साहब जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनाब प्रोफेसर गनाई साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? Professor Ganai, can you hear me? Hello. Can you hear me, sir? Yeah. Right, sir. You have heard Professor Raina and you heard Khurshid Saab as well. So I would like to ask you, as you are a Dean of Social Sciences from University of Kashmir and you belong to the higher education, we will be asking the questions to other panelists about the secondary education and the primary education and what is being done as far as the special education is concerned. But my question to you will be, can you put some light on, from the point of view, the higher education, the college education and the university education, what kind of provisions you have available there for these kind of students whom we call the special need students? Can you put some light on that, sir? Professor Ganai. Kapoor Saab, am I audible? Yes, you are. Hello. Yes, you are audible, sir. Before
coming to higher education, let me make some certain revelations about the legal aspect of the problem. Right, sir. You see, the parliament of our country, India, it passed Disability Act way back in 1995. Right, sir. On the same analogy, our Legislative Assembly also passed the Disability Act in 1998. Right. But we see, as far as the job identification order, this one was concerned, it was not issued by the concerned Social Welfare Department as late as 2001, and it was then issued in 2001 only after the intervention of Article I Code. Right, sir. So, one anomaly and injustice that the document is reflecting that is with me in my file. 90% posts identified belonged to colonial era. And you see, in post-independence area, those posts ceased to exist. This is the negligence on the part of the state. And we see, it was only because of the efforts of Javed Taq and myself. When we intervened, that a fresh job identification order was issued as late as 2014, which provided some relief to spatially abled of course. Right, sir. So this is the legal aspect as far as the higher education is concerned at college level to university level. Let me tell it with all authority, it is a neglected sect in the Union Territory of Jammu and Kashmir. And you see, University Grants Commission, on the analogy of the Disability Act passed by the Parliament, is suggesting many things. And if you will give me time, I have a document along guidelines for persons with disabilities scheme in college, 2012-2017. Many things, many promises are there. As we call in Urdu, ye kagzi gode rahe hain by and large. Right, sir. So we see objective, it has two parts. Higher education for persons with special needs. So it is objective to provide equal educational opportunities to differently abled persons in higher education institutions. Number two, to create awareness among the functionaries of higher education about the specific educational needs of differently abled persons. To provide special devices to higher education institutions that will augment the learning experiences of differently abled. To monitor the implementation of all existing and future legislation and policy which are pertaining to higher education of differently abled persons. So this is a long document. What I want to convey, it will take much time. By and large, to my understanding as a professor of history at the Veracity over here, I have worked to some extent, and my brother Javed Taq, one of our sincere panelists, heading this Zeba Apa NGO, I have come across this NGO, which is very active. And we see on the whole what is required. Because welfare state has weakened many-fold. And corporates are in the world, especially developing world. So
we see though the technology has helped us in different ways, like talking books, computers, and you see, especially for visually impaired, there are very good chances. As one of my students, Tariq, as Jayed Saab knows it very well, he is from Anantnag, Andhra. He was first appointed as school teacher, then plus 2 teacher, and today he is teaching at degree college Uttarasu Anantnag and most successful teacher. That happened because his father was very much learned and he came in touch with Javed Ahmad Shah. So my capable student has become the college teacher and is giving best to his students. As a professor of history at the University of Kashmir, as well as social activist, let me tell you with all authority that there is no political will at all. Right, sir. Let me stop you there, sir. We will take this point after, because we have the questions on this, that what we should be doing, what is the responsibility of the government, and what is the responsibility of civil society, and what we have to look into the things as a private institutions as well as the government institutions. I have a question for you on that, but I will come back to you. Let me take here Mr. Sharav Anand, Professor Sharav Anand. Yes, you are a teacher, you are a professor, you are a teacher trainer in a university. My question to you is a very simple question. That your question is having two parts. First of all, you will be telling us something about Jammu province, Jammu division, that do you have any kind of a data available from the Jammu division that indicates the number of such disabled or differently abled students which we have to provide and which we have to cater in the field of the education. And the second part of my question will be that what kind of trainings do you provide to the teachers and how you monitor that? These are my two questions to you. Yes, Professor Sharav Anand. Okay, first of all, I would like to focus on, before going to what should we do, what should not we do, we should first focus on what disability is, because we need to understand first what the nature of the disability is. Because as my previous panelists have very well explained, that when we talk about special education, we only focus on physical disabilities, because that is what we have learned, that disability means physical disability or visual impairment, but that is not the case. Recently also, in 2016, the government of India have come up with an act that is called the RPWD Act, that is the Revised Persons with Disability Act 2016, in which the government has introduced 21 new types of disabilities, which the persons under which will be getting the benefits. And under that, there are 21 different types of disabilities which have been included, such as autism, specific learning disability, intellectual disability, which I would like to correct my co-panelists also. Previously, it was known as mental retardation, but now the international convention, or they have changed the name. Now it is known as intellectual disability. Right. So it is intellectual. It is called intellectual disability, and then cerebral palsy, acid attack victims, and like these 21 disabilities have been included, and some criteria have been set by the government. So by following those criteria, the children with disabilities or the persons with disabilities will be getting the benefits. And not only in the area of studies, but even when they go to search for their job. For instance, there is a criteria for 40% benchmark. That is, if a person wants to get a job under the Persons with Disability Act, he or she should have 40% disability. That should be notified, or that assessment should be done by a
duly attested by a, yes sir. Yes, Professor Anand, Yes, we can sir. understand. We can understand that these are the criteria laid down under the Disabilities Act, or what you call the kinds of the disabilities, and we can include. But as far as a common person is concerned, who like we have two parents here who are having their children with some kind of the disabilities, what kind of message you want to give to the people, to a common person, that what kind of trainings are you providing to the teachers, so that when they are out from your training institution and they go to the institutions where they are supposed to deliver their duties, so what kind of those trainings are, if you can just focus on that and tell us something about that. Yes, see, sir. First of all, what we teach our students is that they do not have to differentiate between those two students, a child with disability and a child who is not having a disability, because all children, what we teach is are same. What we teach is that every child is same, and every child has a way of learning. A particular child can learn easily, but another child can take some time to learn it. That is how we start training the students who come to become special educators, and then slowly we teach them. First of all, we teach them what disability is, because they need to understand what a disability is, that what they are tackling, that what a child with whom they are teaching, what kind of difficulties the child is facing. Because when they will be aware about the difficulties of the child, only then they will be catered to the needs of the child. So then then we teach our students to how to talk to the parents. That is, how will they, because they need to give therapies to the student, they need to teach the student. For that, they have to take the parent also into confidence. That what strategies they will be following, what type of lesson plans they will be creating, what type of individual attention they will be giving to the child. So a parent is the most important advocate in special education, because a parent a child stays more hours with the parent as compared to the special educator. So in special education, it is a balanced act between the teacher and the parent. So when the parents and the teachers, they both come together, then and only then we can say that special education can be fruitful. And in it, the teacher also plays a very major role, specifically a special educator, because a special educator has to rectify this a general teacher also, in order to make that teacher aware that the child is not what we say in our language, the child is not nikhat, or the child is not he's not doing it on purpose. The child is having some difficulty, and he will overcome the difficulty if the child is taught in a certain way. Professor Anand, I will come. Sorry, Professor Anand, I will come back to you with some answers from you about the monitoring of the progress and monitoring the effectiveness of the teachers. I will come back to you. Let me take here one of the parents. Javed Sahab. Ji. Javed Sahab. Janab. Can I come in? I would just make from my school what we are doing. I'm sure this will make the basis of what Sheriff Anand Sahab and what Professor Sahab has said. That will be fantastic. That will be fantastic, Khurshid Sahab. But let me take Miss Shafakat Sahiba first, and then I will come back to you. Thank you. Shafakat ji, can you hear me? Can you hear me? जी शफकत जी, अभी प्रोफेसर आनंद साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि पेरेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर. अब टू डील विद द पेरेंट्स एंड टू डील विद द चाइल्ड एज वेल, आप क्या समझते हैं कि आप एक बच्चे की माँ हैं और आपने ये बिल्कुल नजदीक से देखा है, कहां तक आपने ये महसूस किया है कि आपको वो तमाम सहूलियात या एजुकेशन के फील्ड में आपके बच्चे को वो चीजें मिल रही हैं, और आप कौन सी चैलेंजेस फेस कर रही है
اس پہ ذرا تھوڑی سی ہمیں روشنی ڈالیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ نے جو انسٹیٹیوشن قائم کیا ہے اس کے پیچھے کیا تحریک تھی آپ کو وہ قائم کرنے جی کے لیے؟ جی جی بہت بہت شکریہ. بہت اچھا کہا پروفیسر آنند نے کہ پیرنٹس اور اسپیشل ایجوکیٹر ایک ٹیم ہے، اور جب یہ ٹیم مل کر کام کرتی ہے تب ہم بچے میں ریزلٹس دیکھتے ہیں. اب رہی بات ٹیچر کو تو ٹرین کیا گیا ہے یا وہ پہلے سے ہی ٹرینڈ ہے، تو پیرنٹ کو ٹرین کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ہر پیرنٹ کو پہلے اس کی جو بچے کی کنڈیشن ہے اس سے اویئر کیا جائے کہ آپ مت کمپیئر کیجیے اس کو ہر دوسرے بچے کے ساتھ. اس کی کنڈیشن اسپیشل ہے، اس کی اپنی ایک لیول ہے جہاں تک یہ جا سکے گا، کب تک پہنچے گا. مطلب بچے دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیرزن تو سب سے پہلا سٹیپ ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ کوئی کمپیرزن نہیں کیا جائے گا. پھر اس کی کنڈیشن پیرنٹ کو سمجھائی جائے گی، اس کے بعد پھر ٹیم ورک شروع ہوتا ہے اسپیشل ایجوکیٹر کا اور پیرنٹ کا مل کر. تو اسپیشل ایجوکیٹرز کافی ڈیڈیکیٹڈ ہونے چاہیے. اس میں ہمارے پاس بہت بہت کم محدود یہ یہاں ریشیو ہے، نمبر ہے اسپیشل ایجوکیٹرز کا، اور یہاں سے لوڈ بہت بڑھ رہا ہے ہمارے بچوں کا جن کی کنڈیشن اسپیشل ہوتی ہے. تو ایک ہے کہ آپ ایک پروفیشن چوز کرتے ہیں اسپیشل ایجوکیٹر بننے کا، لیکن جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ جو یہ سمجھے کہ یہ نہیں جس ایک نارمل بچے کو آپ 10 دن میں ایک ٹاپک سمجھاتے، یہاں 1 سال بھی لگ سکتا ہے اس کو سمجھانے میں. تو اس ٹیچر میں ڈیڈیکیشن ہونا بہت ضروری ہے، تب وہ پیرنٹ کو بھی گائیڈ کر سکتا ہے اور انشاءاللہ بچے میں بھی ہم وہ امپرومنٹ دیکھ سکتے ہیں. جی آپ تو کیا ہمارے سمجھتے ہیں؟ ادارے میں ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے چیلنجز ایسے ہیں جن کو اوور کم کرنا چاہیے؟ جی چیلنجز ہر جو ہمارے نارمل ریگولر سکولز ہے وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں ہر بچہ ایک ہی لیول کا نہیں ہوتا ہے. ہر بچے کی کیپیسٹی الگ ہے، اس کی لیولز الگ ہے، وہاں پر بھی جسٹس ہونا چاہیے. پھر سوال آتا ہے انکلوسیو ایجوکیشن کا، جیسے کہ جو مجھ سے پہلے یہ جو بھی پینلسٹ تھے انہوں نے یہ بات صحیح کہی، نہیں مطلب پاسبل ہوتا ہے 2 بچوں کو ایک ساتھ بٹھانا جہاں ان کی الگ الگ مینٹل وہ کیپیبلٹیز ہو. تو ایک مطلب اسٹیٹ آف آرٹ ایک اسکول جو اسپیشل ایجوکیشن پرووائڈ کرے ان بچوں کو وہ بہت ضروری ہے. پھر کس طرح سے وہ اسٹیبلش کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے سول سوسائٹی اور گورنمنٹ کا دونوں کا آگے آنا. آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے پیچھے کیا تحریک رہی آپ کو یہ کام بنانے میں، اور آپ کیا کر رہے ہیں ذرا تھوڑا سا مختصراً سے ہمیں بتا دیں. جی 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 میرا پہلا بچہ آٹسٹک ہے اور ہم 2012 تک دبئی میں ہم رہتے تھے. بچہ بھی وہیں پیدا بھی ہو اور اس کا ارلی انٹرونشن جس کو کہتے ہیں کہ جب بچے میں کنڈیشن ظاہر ہوتی ہے، وہ ایسس ہوتی ہے، ڈائگنوز ہوتی ہے کہ اس بچے کی کنڈیشن ایسی ہے، تو ارلی انٹرونشن یعنی جتنا جلدی ہو سکے اس بچے پر کام شروع ہوتا ہے. تو ہم وہاں اس کا سب اچھے سے ہو رہا تھا، ریگولر ہو رہا تھا، وداؤٹ اینی بریک ہو رہا تھا، اور ہم کنٹینیوسلی اس کی وہ ڈیولپمنٹ اس کی پروگرس مانیٹر کر رہے تھے. لیکن کسی وجہ سے 2012 میں ہمارا یہاں واپس آنا ہوا، اور کیونکہ میرے بچے کی کنڈیشن جو ہے وہ آٹزم ہے تو کہیں اسٹیٹ آف آرٹ فیسلٹی اسکول اور اسپیشل اسکول فار آٹسٹک کڈس ایسا مجھے کہیں نہیں ملا. جی 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 ماشاء اللہ بی ایم ایس بہت ہی بہترین کام کر رہا ہے اس فیلڈ میں، لیکن مطلب وہ فزیکلی چیلنج بچوں کے لیے بہت اچھا ہے یا مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کے لیے ہے. لیکن آٹزم جو ہے یہ ایک ایسی ڈسیبلٹی ہے یا اسپیشل کنڈیشن کہے جو ان سب سے الگ ہے. اس کے لیے تو مطلب شروع سے لے کے آخر تک ایک بالکل ایک الگ انتظام ہونا چاہیے. تو وقت گزرتا گیا اور پھر آخر کا ریئلائز میں نے کیا کہ نہیں شروعات کرنی ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہمارے ساتھ لوگ جڑیں گے. تو ہم نے آٹزم ویلفیئر ٹرسٹ کی شروعات کی. اسی ٹرسٹ کے انڈر ہماری پہلی فیسلٹی لرننگ ایج اسکول، لرننگ ایج سینٹر فار ارلی انٹرونشن اینڈ آٹزم، یہ منور آباد ایریا میں اسٹیبلش ہوا ان ایئر 2019. تو الحمدللہ 2 سال کمپلیٹ ہوئے. ہم زیادہ ہمارا فوکس ہمارے پاس انرول بچے جو ہے وہ ان میں ڈاؤنز اور دوسری کنڈیشن کے بچے بھی ہیں،
लेकिन हमारा प्राइम फोकस जो है वो ऑटिस्टिक बच्चों पे हो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, बट वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, स्पेशली जब प्रोफेशनल्स की बात आती है, बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, कुछ और सवालात आपसे पूछूंगा। खुर्शीद साहब, आप कुछ फरमाना चाहते थे, बहुत मुख्तसरन से बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी बहन ने एक बहुत ही अहम सवाल उभारा है, और वो ये सवाल ये है कि जब वो दुबई वापस आ गई और उन्हें अपने बच्चे की देखभाल, फलाह व बहबूद, तरक्की के लिए कुछ नजर नहीं आया, तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन कायम करने की ठान ली, जो आज 2-3 साल से काम कर रहा है। और उन्होंने इसकी तरफ भी इशारा कर दिया कि जो डिफरेंटली एबल बच्चे होते हैं उनकी भी डिफरेंट नीड्स होती हैं, वो एक ही नीड में या एक ही तराजू से उनको तोला नहीं जा सकता है। तो आप क्या फरमाना चाहेंगे जनाब खुर्शीद साहब, मुख्तसर? was started by doctors of the president, because उनका खुद अपना था ENT में, he would often fear these impairment and speech and hearing problems, so he started that school. मेरे में तो था वो spinal injury का, but then as a disabled I also got interested in it, क्योंकि अब जो वो अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि that 21 disabilities we had identified in the true, वहां पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया यहाँ, but the question we have to see डिसेबिलिटी, चाहे वो स्पेशल स्कूल्स की हो, स्पेशल चिल्ड्रन की हो या बड़े की हो, उनका एंड रिजल्ट क्या है, व्हाट इज द एंड रिजल्ट। जो आजकल गवर्नमेंट जितना सारा वो कर रही है, उनमें अगर आप ऊपर देखेंगे दे विल टेल यू आइडेंटिफाइड, एनरोल्ड, फिर इसमें कितने ठीक कितने हुए जो नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं, यू वोंट फाइंड दोस फिगर्स। आई टेल यू व्हाट वी आर डूइंग इन आवर स्कूल। हमारे पास जो स्कूल है वहां पर शफकत स्कूल है, पहले we have two स्कूल में हमारे पास we have 45 children, फिर हमारे इंक्लूसिव स्कूल में 30 children हैं, स्पेशल स्कूल में हम उनको we have about the moderate, severe, profound intellectual disability, speech and hearing impairment, high and low functioning autism हमारे पास, but जैसे ये so that needs a full time उनका होना चाहिए। अच्छा, 30 स्टूडेंट जो हमारे पास यहाँ पर है, they are borderline and उनका माइल्ड IQ है, ये टेकन जो अपने प्रोफेसर साहब पहले वो जो कह रहे थे रैना साहब, ये ट्रेनिंग के बाद नॉर्मल टीचर को अगर ट्रेनिंग आप दे देंगे टू टीच ये स्पेशल चिल्ड्रन, he has no absolutely no interest, that is not his profession. टीचर होना चाहिए स्पेशल एजुकेटर। I could see that around we have around a table 2-3 my mentally retarded children. Special educator sits with them up to a subah ka forenoon sara. Those 3 children are of different IQ levels. Just note it, different ages. और ये उनको पढ़ाता रहता है A क्या है, B क्या है, C को क्या है. At the same time, he has to find, evaluate ये कितना पिकअप कर रहे हैं मेरे से. 3 बच्चे 3 लेवल्स के हैं और उसको इतना थक जाता है. स्पेशल एजुकेटर का काम अप्रिशिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो उसके लेवल और वहां से वो कब चला जाएगा. वी हैव दीज 30 स्टूडेंट्स. फिर आगे जब 8th तक हमारा रिकॉग्नाइज्ड है, उसमें से हमारे 6, 7 और 8वीं क्लास तक 3-3, 4-4 बच्चे गए हैं. Each children needs maybe 2 years, 3 years आगे चलने के लिए, because it is learning capacity is very less. हमारे पास खुर्शीद साहब, आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है. आप जरा थोड़ा सा अपना माइक का नजदीक से इस्तेमाल करें. Okay, I will do it. शायद मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ. नहीं, आप माइक से हट कर बात कर रहे हैं. आप माइक को नजदीक रखिए. जी, माइक तो नजदीक ही है. आई डू नॉट नो अभी ठीक है. प्रॉब्लम. अच्छा, ओके. अच्छा, स्टाफ जो हमारे पास है, नो कंपेयर दीस, जिन 30 या 40-45 बच्चों के लिए हमारे पास स्टाफ क्या है. वी हैव ऑन होलिस्टिक बेसिस 1 डेवलपमेंट थेरेपिस्ट, 1 काउंसलर, 2 स्पीच थेरेपिस्ट, 1 ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, 2 फिजियोथेरेपिस्ट,
4 who have been rehabilitation therapists, 3 special educators, 2 assistant special educators, 1 gym administrator, 1 sports trainer, vocational trainer, transportation facilities. इसमें हम क्या क्या देते हैं उन सबको करने के लिए? Beyond 5 helpers साथ में हैं उनके. We have उनके पास development therapy, behavior modification therapy, parental counseling, speech therapy, physiotherapy, occupational therapy, this activities of daily living, उसमें kitchen facilities देते हैं, and then community orientation. We send them to different hospitals where we show them. आप खुर्शीद साहब, आपका इंस्टीट्यूशन बहुत ही कमेंडेबल जॉब कर रहा है और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है. इस पे मैं मजीद आपके साथ बात करूंगा. जी 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 जी. ये जो टीचर्स है ना, टीचर्स एटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल मैंने खुद इन 2018 में देखा, और स्कूल में गया था वहां पर इन डिफरेंट अपने डिफरेंट काम से. और स्कूल मिडिल गवर्नमेंट स्कूल, नॉर्मल बच्चों के साथ बैठे थे 5 बच्चे. उन 5 बच्चों में से 3 मेंटली डिटर्ड थे और 2 थे स्पीच और हियरिंग के. अब जब टीचर पढ़ाता था, जब वहां मुझे ले गए, वो उसने काफी इज्जत दिखाई. मैंने उसको कहा इसमें कोई डिसेबल्ड है? तो उन्होंने कहा ये 5 है. और ये 5 क्यों यहाँ पर है? अभी जी इनका वो टाइम नहीं आया वहां पर जाने के लिए, तो फिर इनको घर पर होना चाहिए था. नहीं, वो पेरेंट्स कहते हैं इनको दिन को यहाँ पर बिठाओ, रोस्टर के बाद वो वहां पर ले जाएंगे. नाउ इमेजिन दोस एंड व्हाट वी आर डूइंग इज हमारे पास एक एग्जांपल. ये कुछ खुर्शीद साहब कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, इस पे हम बात कर लेंगे. यहाँ पे जावेद साहब जो हैं, जावेद साहब आप मेरी बात सुन रहे हैं? जनाब जावेद टाक साहब, कैन यू हियर मी? Yes sir, I am hearing you. राइट. आपने इन पैनलिस्ट्स की बात सुनी, खुर्शीद साहब की बात सुनी और सभी की बात सुनी, और जहां तक आपका ताल्लुक है, आप भी एक हादसे के शिकार हो गए हैं और व्हील चेयर पे तब से हैं. तो ये भी आपके लिए एक तहरीक बनी होगी कि इस सेक्टर में काम करने के लिए. लेकिन चूंकि आप सेकेंडरी लेवल पे और प्राइमरी लेवल पे इससे जुड़े हुए हैं, आप हमें ये बताइए कि आपने जो ये ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूशन जो बिजबिहाड़ा में कायम किया, इसको कायम करने के लिए क्या तहरीक बनी आपकी, और आप क्या समझते हैं कि जब खुर्शीद साहब ने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया कि हमारे पास जो ट्रेनर्स होने चाहिए, जो स्पेशल एजुकेटर्स होने चाहिए, वो हैं? अगर हैं तो उन्हें किस किस्म की ट्रेनिंग मिलती है? अगर नहीं है तो उनको ट्रेन करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जी जावेद साहब. जी, जैसा कि खुर्शीद साहब ने बताया कि खुर्शीद साहब हमारे पूरे डिसेबिलिटी सेक्टर के यहाँ मेंटर है, गाइड है, और जो इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी बना के हमारे सामने पेश किया, तो वो एक काबिल तहसीन है, काबिल दाद है. As he is not an individual, he is a mission in itself, Mr. Khurshid मलिक साहब. सो जो जिस हादसे का मैं शिकार हुआ, जैसा कि आपने बताया, तो उसके बाद जो मैंने डिसेबिलिटी को क्लोज रेंज से देखा, तो मेरे ख्याल में यही आया कि अगर बाकी नॉन डिसेबल बच्चे पढ़ रहे हैं तो डिसेबल बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं. तो जब मैंने अपने थोड़े इर्द गिर्द में यहाँ पे अपने माहौल में देखा, अपनी सोसाइटी में थोड़ा सा सेंसस किया, तो मैंने देखा कि मोस्टली जो बच्चे हैं दे वर टायर्ड इन होम्स. उनकी हार्श बिहेवियर की वजह से वो स्कूल नहीं आ पाते थे. पेरेंट्स बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे. अवेयरनेस बिल्कुल कम थी, जैसा शफकत जी ने बोला. और जब हमने ये स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो मैन पावर था, और मैन पावर हमारे पास नहीं मिलता था. और दूसरी जो अहम चीज़ है वो है एक्सेसिबिलिटी इन स्कूल्स. तो क्योंकि जिस मोड पे हम थे, जहां हमने देखा कि ये स्कूल बच्चे ड्रॉप आउट क्यों है, तो हमने देखा कि इट वाज इन एक्सेसिबिलिटी इन स्कूल्स. दूसरा जो स्पेशल एजुकेटर्स दे वर नॉट अवेलेबल देयर. तीसरा ये कि जो क्लासरूम सेटिंग्स है वो बिल्कुल भी डिसेबल फ्रेंडली नहीं है. वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है. स्कूल की बिल्डिंग्स तो बिल्कुल एक पूरा बैरियर है डिसेबल चिल्ड्रन के लिए, वो नहीं जा पाएंगे.
اور اس کے بعد ایک بالکل بھی سینسٹائزیشن امنگ دا ٹیچرز نہیں تھی. جو میں نے پہلا بچہ ایڈمٹ کیا اپنے سینٹر میں, وہ ایک بلائنڈ بچی تھی, اور اس وقت ماشاءاللہ وہ بی اے آنرز کر رہی ہے دہلی یونیورسٹی سے. تو جب میں نے اس کو فرسٹ میں یہ بتایا کہ آپ اسکول سے ڈراپ آؤٹ کیوں ہوئی, اس نے بتایا کہ سب ٹیچرز مجھے بول رہے تھے کہ آپ ڈسیبل ہو, آپ کی بلائنڈنس ہے, تو ہم آپ کو پڑھا نہیں پاتے ہیں. تو میں نے بولا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصلی مسئلہ کیا ہے؟ اس نے بولا میرے سامنے تو سبھی ٹیچرز ڈسیبل ہیں, وہ مجھے نہیں پڑھا پاتے ہیں. تو یہ میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو ہم نے کوشش کی. اس وقت جو ہمارے پاس مین پاور ہے قریباً 12 ہمارے پاس اسپیشل ایجوکیٹرز فزیو تھراپسٹ ملا کے ہے. تو ان کی جو ہم ٹریننگز دیکھتے ہیں کہ وہ خود ہی ٹرینڈ ہے, وہ باہر سے ٹریننگ کر کے آئے ہیں. یہاں پہ کمپوزٹ ریجنل سینٹرز میں بھی ایک کورس چل رہا تھا, ڈی آر ٹی ڈپلوما ان ریہیبلیٹیشن تھراپی, انہوں نے وہ بھی کیا ہے ہوا ہے. لیکن اوور آل ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ سے پرسنز کو لایا جاتا ہے. اب تو کووڈ کے دوران ہم نے بہت سارے ویبنارز بھی اٹینڈ ان کو کرائے, اور ہم ان کو اپڈیشن کرا رہے ہیں کہ دے شوڈ ڈو ایٹ پار کے جو باہر ہو رہا ہے کیا وہ ہمارے یہاں بھی ہو. لیکن ابھی تک جتنے بھی چیلنجز ہے وہ یہی ہے کہ اویئرنیس بہت کم ہے, سینسٹائزیشن تو بالکل بھی نہیں ہے. اور ابھی ہمارے پاس وہی چیریٹی اورینٹڈ ماڈل ہے, جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ جن کے گھروں میں ڈسیبل بچے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان پہ انویسٹ کریں گے تو یہ ضائع ہو جائے گا. اور جہاں تک سرکار کا سوال ہے, ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ایٹ کنٹری لیول ہر سال جو نیا پریزیڈنٹ صاحب آتا ہے, پرائم منسٹر صاحب آتا ہے, وہ نیا نام دیتا ہے. کوئی اسپیشلی ایبلڈ, کوئی ڈفرینٹلی ایبلڈ, کوئی پرسن ود اسپیشل نیڈس. لیکن جب ہم یو این سی آر پی ڈی سے لے کے جو بڑا قانون ہے, جو یو این کنونشن پورے گلوبلی زیادہ لوگوں نے اس کو, زیادہ کنٹریز نے ایکسیپٹ کیا ہے, ریٹیفائی کیا ہے, وہاں پہ ایک ہی ٹرم ہے پرسن ود ڈسیبلٹی. تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ سوسائٹل لیول پہ بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ گھر والے بولتے ہیں, اگر کشمیر میں دیکھا جائے سیٹھ کنگ مٹھ, مگر جب ہم دیکھتے ہیں تو سیٹھ کا مطلب ہے پیسے والا, وہ بیچارہ پٹری کی صفائی کرتا ہوتا ہے لیکن سیٹھ نہیں ہوتا ہے, سیٹھا بولتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم کیپیبلٹیز کو ڈیولپ نہیں کرتے ہیں, نام دیتے ہیں. ہمارا ہریجن کو بھی نام دیا گیا تھا آج سے 100 سال پہلے یہاں, لیکن وہ آج بھی وہی ہریجن ہے, ان کے ساتھ ابھی بھی وہی سلوک کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈسیبلٹی سیکٹر میں بھی نام دیے جاتے ہیں, لیکن رائٹس کہاں پہ ہے؟ جو ہمارے ایکٹس ہے ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی ہے. اور جو رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز ایکٹ ہے اس کو ہارمونائز بھی کیا گیا, 95 میں پہلے ایکٹ بنا, پھر اس کو ریپلیس کر کے 2016 میں رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز ایکٹ دیا. اب رولز بھی آ گئے, اب اس کے پالیسی بھی بن گئی, لیکن امپلیمنٹیشن بالکل زیرو ہے. اگر اس کی امپلیمنٹیشن صحیح سے ہوتی, اور ہم دونوں سیکٹر, میں نہیں یہ بول رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا, گورنمنٹ لیول پہ بہت سارے چیزیں ان پلیس ہے, لیکن اگر ان کی صحیح امپلیمنٹیشن ہو جائے اور لوگ جو جن کے گھروں میں یہ بچے ہیں اور جن کا کنسرن ہے کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز امپاور ہو جائے, تو اگر ہم کلیکٹیولی ایک ایفرٹ کریں گے تو ایک نیا معاشرہ بن جائے گا. ہمارے کنٹری میں ایک بڑا سا سلوگن ہے سرو شکشا ابھیان, SSA, جو کہ قریباً 15 ایئرس تک چلا, لیکن تب تک یہ 100% لٹریسی کاؤنٹ اٹ ول ناٹ ہیپن until and unless we don't give education to every child. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ آرٹسٹک چائلڈ ہے, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو PhD ڈگری کرا رہے ہیں. اس میں یہی ہے کہ جو اس کی کیپیسٹی ہے, ایز پر ہز کیپیسٹی ہم اس کو کہاں پہنچا رہے ہیں. اور یہاں انکلوژن میں بھی یہی, in creating the inclusion we have the only one confusion: how can we provide same space for a child with intellectual disability, and how can we give a child a space with a child with disability who has highest IQ. It is not that. بہت بہت شکریہ جناب ٹاک صاحب. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے کچھ انتہائی اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہے جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ میں جناب انظر موجو صاحب, آپ کو انتظار کرنا پڑا, لیکن خیالات کچھ نہایت اہم نکات جو ہمارے سامنے آئے. پروفیسر محمد یوسف
صاحب نے ایک بہت اچھی بات یہ کاغذی گھوڑے، اور اسی طرح سے جناب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈسیبلٹی رائٹس کیا ہیں ان کے، وہ بھی صرف کاغذوں میں گم ہوتے رہتے ہیں. کچھ آپ بتائیے، کیا آپ ایک والد بھی ہیں، وہیں سے ایک والد کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے چیلنجز اور آپ کی ضروریات کیا ہیں؟ کیا آپ اس سے نبرد آزما ہو جائیں؟ ایک بات. اور دوسری بات، چونکہ آپ ڈاؤن سنڈروم ایسوسیشن پاکستان، ان کی کیا صورتحال رہی ہے، اور بارہمولہ کے حوالے سے جہاں پہ جناب منی صاحب نے کچھ فگرز ہمیں دے دیے ہیں، 6,850 کے قریب ایسے ہماری ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے وہاں پہ جن کو ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ بارہمولہ کے حوالے سے آپ کس قسم کی سہولیات محسوس کرتے ہیں یا نہیں ہے؟ کن مشکلات کا آپ کو بیسیکلی فادر کے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس ڈاؤن سنڈروم جس ایسوسیشن کے حوالے سے آپ وابستہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ ذرا ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں. صاحب یہاں پر جو پینلسٹس حضرات بیٹھے ہوئے تھے بہت ہی ایکسپرٹ ہے اپنے اپنے شعبوں میں. آئی ایم دا پراؤڈ پیرنٹ آف اے ڈسیبل چائلڈ. تو اس ضمن میں آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ جو یہاں پر میں ایک طبقے کی بات کروں گا اس میں، وہ جو ڈاؤن سنڈرومز ہماری جو ہے، پہلے یہ اللہ کا کچھ ایسا ہی ہے نظام ہی چلا کہ 90 کی دہائی کے بعد ہی یہ جو ڈاؤن سنڈرومز ہے، پہلے یورپ وغیرہ میں ہوا کرتے تھے، لیکن اب جموں کشمیر اور کشمیر میں بھی ان کی تعداد بہت اچھی خاصی بڑھ رہی ہے. جو خورشید صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے جو ایک اعداد شمار دیا ضلع بارہمولہ کے حوالے سے، تو ایک میں چونک گیا وہ اعداد شمارات تھے، اور انہوں نے وہ جو اسپیشل جو ایجوکیٹرز کی بات کی. آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں پچھلے 2 سال سے چیف ایجوکیشن آفیسر اور دوسروں کو ان کے بارے میں یہاں پر انہوں نے 4 کا شاید تذکرہ کیا، لیکن ہمارے ضلع میں ایک محترمہ ہے جو سری نگر سے آتی ہے، 2 سالوں سے وہ مجھے کہیں نہیں ملی ہے. جس دن میں آفس میں ان کے ساتھ ملنے گیا تو بہرحال وہ کسی جگہ گئی تھی یا گھر تھی یا کہیں تھی، وہ دیٹ از اے سیکنڈری کوسچن سر. ہمیں یہاں پر اگر ہم نارتھ کشمیر کی بات کریں، ضلع بارہمولہ کی بات کریں، ہمیں ایسا کوئی یہاں پر اسکول نہیں ہے جو ہمارے ان اسپیشل بچوں کو کے لیے پڑھانے کے لیے کوئی جگہ ہو. جب میرا بچہ جو ہے اس وقت جو 7 سال کا ہے، جب میں اس کا ایک وکٹم بن گیا تو میں نے بھی بہت کوششیں کی. یہاں کے جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرس تھے اس ٹائم، ان سے اپلیکیشن اپنے ان سے ریپرزنٹیشنز دیا کہ ہمیں ایک اسکول فراہم کیا جائے. یہاں پر ایک سینٹ جوزف اسکول ہے جہاں پر میں بھی پڑھا ہوں، شاید جاوید صاحب بھی آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں وہاں سے. وہاں پر ایک ان کے لیے ایک الگ بچوں کے لیے تھا یہاں پر، جس کا نام تھا جیون جوتی نے رکھا تھا. لیکن بدقسمتی سے پچھلے 4 5 7 سالوں سے انہوں نے وہ بھی بند کر دیا وہاں پر. یہاں پر یہ میں بات بتاتا چلا ہوں کہ پھر ہم نے جو یہ ڈاؤن سنڈروم بچے تھے، ان کے جو پیرنٹس تھے، ہم نے اپنے طریقے سے ایک سکول بنانے کی کوشش کی. اینڈ یہاں پر میں یہ برملا طور بتاؤں اس جگہ پہ، اس پلیٹ فارم میں، وی آر ویری ویری گریٹفل ٹو یہاں کا جو لوکل آرمی ہے. they have provided the shelter to those special childrens. تو وہاں پر ہم نے اس سکول کا نام پریوار رکھا ہے. میں سمجھا نہیں، لوکل کیا لوکل بتایا آپ نے، کیا لوکل کیا ہے؟ یہاں پر جو ہماری آرمی یونٹ ہے، آرمی کا انڈین آرمی یونٹ جو ہے، اچھا فوجی یونٹ، they have provided a shelter to these special children's school. تو اس سکول کا نام رکھا گیا ہے جی اس سکول کا نام رکھا گیا ہے پریوار. اس میں جو ہے جو ٹیچرز بھی ہے، جو اس میں وہ ان کی آیا ہے یا کچھ ہے، جو بھی کچھ اس میں ایفرٹس ہے وہ سب ہے. کوئی پیرنٹ ہے، کوئی ٹیچر فیمیل ہے، وہ اس کو وہاں پر پڑھاتی ہے، 2-4 بندے، اس میں کوئی سیلری نہیں، کسی کا کچھ نہیں، وہ انہی بچوں کا خیال رکھتی ہے. لیکن جو یہاں پر جو یہ میں بات بتاؤں کہ ایک
سرکار کی سطح پر یا کسی اور سطح پر ایسا کوئی یہاں پر کوئی فیسلٹی جو ہے ضلع بارہمولہ میں یا نارتھ کشمیر میں ایسے اویلیبل نہیں ہے. اگر ہم جاتے ہیں, اگر جب ابھی یہ بات ہوئی کہ ہم سرکاری اسکول میں جاتے ہیں, سرکاری اسکول جو ہے بہت ہیزیٹیٹ کرتے ہیں ان بچوں کو ایڈمٹ کرنے میں, تو یہ ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے. جیسے کہ ابھی ٹاک صاحب نے بھی یہ بتایا کہ جو سرو شکشا ابھیان کے ساتھ انہوں نے وہ بات بتائی ایجوکیشن ٹو آل, تو یہ کہاں ہو رہی ہے, وہ ایجوکیشن ٹو آل نہیں ہے نا, سب کو ملتی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس پر بہت کام کرنا چاہیے, اور اس ہماری سوسائٹی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان بچوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. جو بھی کوئی ڈسیبل ہے اس کو تو بہت آگے جانا چاہیے, لیکن ہماری سوسائٹی میں جو ہے, جو اگر تھوڑا سا بھی کوئی ڈسیبل ایسا ہو یا وہ ڈاؤن سنڈروم, مجھے یاد آ رہا ہے پہلے ان کو بولتے تھے گئے درویش, گئی کنڈم سوسائٹی میں, مگر وہ تو آج کے ڈیٹ مت ونان. جی سر, اور آج کے ڈیٹ میں جو ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے, ہمیں ایک تشویش ہے ویسے تو پیرنٹ کے ایک, کہ یہ بچے ہماری جو ہے, اگر میرا ایک بچہ ہے, میرا بڑا بچہ ہے, وہ میٹرک میں پڑھتا ہے, اس نے پرسوں 98% مارکس لائی, لیکن دوسرا بیٹا جو ہے میرا ڈاؤن سنڈروم ہے, یہ 7 سال سے میرے گھر میں بیٹھا ہوا, گھر میں اس کو کتنی تربیت دوں. یہاں پر ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ تاکہ ہم بھی, اگر یہ میں ایک پرسوں نیٹ پہ ایک سرچ کر رہا تھا, ایک ڈاؤن سنڈروم بچہ ہے, 25 years old and he is the author of 2 books, لیکن جو اس کو وہاں پر یونائٹیڈ اسٹیٹس میں وہاں پر ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ وہ آتھر بن گیا, ڈاکٹرز بن گئے. ہمارے یہاں تو مت بنیں گے. یہ میرا یہی کنسرن ہے سر. بہت بہت شکریہ انظر صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. جناب گنائی صاحب, آپ وہاں پہ ہیں؟ ہلو پروفیسر گنائی صاحب, آر یو دیئر؟ ہلو پروفیسر گنائی صاحب, آپ وہاں پہ ہیں؟ جناب پروفیسر گنائی صاحب, میں آپ کو اس لیے یہاں پہ لانا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہمارے ایک پیرنٹ نے, والد نے کچھ اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو اس قسم کے ہمارے پاس بچے ہیں, چاہے وہ پرائمری سطح کے ہیں چاہے وہ سیکنڈری سطح کے ہیں, ہمارے پاس بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں پہ یہ بچے جا کر تعلیم حاصل کر سکیں یا ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کیا جا سکے. جہاں تک میری یادداشت میرا ساتھ دے رہی ہے, آپ نے اس سلسلے میں حکومت وقت کے ساتھ بہت سارے مراحل پہ کام کیا ہے. آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ نے کس طریقے سے حکومت وقت کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس امر پر, اس سائیڈ پہ, اس اسپیکٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, یہ ذرا ہمیں مختصراً سا بتائیے. ڈاکٹر صاحب, صحیح بات ہے جو یہ پیرنٹ بتا رہے ہیں, اٹ از ٹچنگ آف کورس. سو مائی سیلف اینڈ جاوید ٹاک صاحب, we have worked together for a long time, and what I feel, we have conveyed everything to the state, to the authorities, but we see there is no action. Yahan badalta nahi zaman. That is problematic. So my understanding, being the student of Indian National Movement and teacher of Indian National Movement, and I have taught here also, I have worked on the regional history. پہلے جو بھی ہم دیکھتے ہیں 50s میں 60s میں اسٹیٹ کے پاس جو کوئی سکیم ہوتی تھی, جو کوئی نیا میجر ہوتا تھا, کوئی نئی سکیم ہوتی تھی, تو اس میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اپنا رول کرتا ہے. If you ask the elders, information department had played a commendable role in past. You see now most of the schemes are remaining confined to elite alone. And even government is not attempting to sensitize their problem society about. So our bureaucracy, we have faced difficulties, and many times I have lost temper in civil secretary, and Jayed is to that.
My point is we have to sensitize the society about ठीक, and how, as well as civil society has a role. Civil society has to come forward, which is not coming. And my suggestion is that the parents of the specially abled should join hands. ठीक, That will become a force itself. It will mobilize the state as well as society in the interest of the specially abled. अभी तो ये मोहतरमा थी अपना खोला है इसने स्कूल, ये पेरेंट जो है बोलते थे कि हम भी क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर एजेंसीज. सो यू सी in Kashmiri we call yeti nar pe dagchte. ठीक, The point is, if the parents of disabled children would join hands from top to bottom, in those whose children are in higher education, secondary education, or facing different problems, you see, this specially abled problem has many dimensions. So if they join hands, they will become an entity itself. गनाई साहब एक सवाल का मुझे आप जवाब दे दीजिए. आपने बहुत काम किया है और अरबाबी इक़्तिदार तक आप पहुंचे, मिनिस्टरों के पास गए, सेक्रेटरीज के पास गए, ब्यूरोक्रेट्स के पास गए. आपको सिर्फ 1, 2, 3 ऐसे चैलेंजेस बताइए जो आपको वहां तक पहुंचने के लिए सर करने, और क्या वजह है कि आपके बार बार उनके पास जाने के बाद भी इस पे कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ, ये जरा बताइए. मैं आपको ये अर्ज करूं, I was very much astonished when I saw the job identity. मेरे ख्याल में वहां पे लाइट चली, आपकी वहां पे लाइट चली गई है. बात तो कर सकते हैं सर. जी बात कीजिए, बात करें. हाँ, प्लीज ये लाइट चली गई. We are arranging. Hello. बात करें आप. Let us talk because we have limited time. So yes, my point is, once I went to this Commissioner Secretary of Social Welfare Department, one is Ghazanfar Sahab, and he told me that just, and Jayed Sahab is witness to it, just a few days back, a few weeks back, we have basically rescheduled and recorded this job identification order. So मैंने बोला साहब, you have repeated all those anomalies which were in the earlier list. And he told me we have spent a lot of money on it. So he was not ready to listen for a long time. Right. Then I basically went to Shivas and utilized Sakina ETC. Made the problem that in case of India, in case of New Delhi and around 90 people with visual impairment could become IAS officers. Our state is not in position to identify one posts for. So once she got convinced, she helped a lot. I am thankful to her, and Javed is witness to that because of our basically efforts. She responded and job identification was then recasted, नए सिरे से issue किया गया, and that helped many of our visually impaired and people with other impairments. They got jobs, got appointed at college level, at school level, and we are after it. But where the problem lies? Whether our minister, whether our bureaucrat, whether our teacher, all of them are coming from the society. And citizen's responsibility and the responsibility of civil society is to sensitize the society about the needs of the society. बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया जनाब. मैं आपको वहां पे जरा थोड़ा सा काट रहा हूं. यहाँ पे मैं
जनाब खुर्शीद साहब को ले रहा हूं, क्योंकि खुर्शीद साहब खुद एक सिविल सर्वेंट रहे हैं और उन्होंने बहुत काम किया है। जनाब खुर्शीद साहब, जो इस सिलसिले में कुछ हडल्स आ रहे हैं, जैसे आपने सुना, जनाब गनाई साहब को भी सुना, कि ब्यूरोक्रेटिक हडल्स जो इसमें हैं, आप खुद एक सिविल सर्वेंट रहे हैं, आप हमें बताइए कि इन चीजों को किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं, इनका इजाला किस तरह से किया जा सकता है? खत्म इजाला, आई टेल यू विद 2 एग्जांपल्स। मैं खुद डिसेबल था एंड वाज वर्किंग देयर एज अ कमिश्नर सेक्रेटरी। एक दफा इन द बिगिनिंग सुप्रीम कोर्ट में जावेद आबिदी वाज इट को बेचारा चल बसा फ्रॉम दिल्ली ऑन हिज ऑर्डर्स ही गॉट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हमें अभी पैसे नहीं है फॉर द डिसेबिलिटी के लिए, एक्सेसिबिलिटी बनाने के लिए, विच इज द बेसिक थिंग एक्सेसिबिलिटी, जैसे जावेद टाक साहब ने कहा। तो उन्होंने जोन्स बनाए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड ईस्ट जोन। नॉर्थ जोन में उन्होंने 2 सिटीज चुनी, दिल्ली एंड जम्मू, जहां पर एक्सेसिबिलिटी सेक्रेटरीट के विद इन 2 किलोमीटर एड्रेस पर कर लेंगे। सो उन्होंने क्या किया, हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, व्हेन इट कुड हैव बीन डन वेरी इजीली, वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे दीजिए एक्सेसिबिलिटी, जितने टॉयलेट्स है, सेक्रेटरीट है, ऑफिस है, वहां पर बना दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% फंडिंग थी। कमेटी बनाई, कमेटी में उन्होंने देखा शायद ये भी डिसेबल्ड है, मुझे भी ले गए। सो आई वाज देयर। तो एवरी टाइम आई वुड आर्ग्यू, भाई इसमें कोई कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। प्लेस द फंड्स विद अ पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड आस्क हिम टू डू इट इन अ पर्टिकुलर टाइम। दिस इज द अमाउंट, पैसे आपके पास आए हैं, नहीं वी विल जस्ट असेस इट। पहले उन्होंने दे दिया रूरल डेवलपमेंट को, रूरल डेवलपमेंट ने कहा हम ये सिटी का है, देन द पीडब्ल्यूडी, नथिंग हैपेंड। देयर वाज अनदर स्कीम कि सेक्रेटरीट में कम से कम, खाली सेक्रेटरीट में टॉयलेट्स बनाइए, ये एक्सेसिबल फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। उसके लिए भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई, व्हेन आई वाज देयर, और मुझको उसमें साथ में रखा। आई रिफ्यूज, आई सेड कि दैट इसमें कौन सी कमेटी बनानी है, यू ऑलरेडी हैव एन एस्टेट डिपार्टमेंट। एस्टेट डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, दूसरे इंजीनियर्स हैं। इफ यू वांट माय हेल्प आई कैन टेल देम हाउ एक्सेसिबल इट शुड बी। बनाए ही नहीं ना, मनी वाज सेंट बैक, इट लॉस्ट इट्स, उसका वो जितना पीरियड था खर्च करने का। इट इज इनसेंसिटिविटी। इसने जो अभी इन्होंने कहा ना, जिसका इमेज पैटर्न पेवांशु सुजानान सुतंगलुक ना अमिक तजर, they just do not understand कि डिसेबल्ड के इस बारे में इस बेचारे को क्या गुजरती है और क्या करना चाहिए। they just do not understand this। देखिए मैं आपको बता दूंगा नक्शल में, बिफोर आई लीव, मेरे लेट और आई एम सॉरी। जी जी जी, ये जो बेसिक जो जावेद टाक साहब ने जो कहा ना, इसने बिल्कुल फाउंडेशन इसने आपके बता दी है क्या है। अगर मेरा आप कोई मान लेता, मेरी बात सुन लेता, ये जो सारा सिस्टम है इंक्लूसिव स्कूल का, जितना सारा ये पैसा स्ट्रक्चर इनमें दे रहे हैं, दिस मी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सारा एक्सपेंडिचर जाया हो रहा है। स्पेशल स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी सेपरेट, जहां पर स्पेशल एजुकेटर्स होने चाहिए, हु आर वेल ट्रेन्ड, हु हैव बीन टॉट, दे हैव डिग्री होल्डर्स, वो वही पढ़ा सकते हैं ये सारा किस तरह पढ़ना है। नॉर्मल टीचर नहीं पढ़ सकता ये सारी चीजें। अब गवर्नमेंट के पास है टू कीप देयर फंड्स, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाए या किस लेवल पर बनाए, और दो शुड बी रेजिडेंशियल, ताकि वहां पर जब भी रह सकता है। देखिए मेंटली चैलेंज, जैसे से यहाँ पर आई विल टेल यू, देयर इज वन स्टूडेंट वाज मुसद्दिक, उसको हाइपर होने की वजह से ही वाज रिफ्यूज्ड बाय दिस नॉर्मल स्कूल। हमारे पास आ गया ना, हाइपरटिविटी जो उसका था वो खत्म हो गई, नेगेटिव बिहेवियर पर भी आ गया, और 4th ग्रेड में भी पढ़ रहा है, और वो थोड़ा सा वो बड़ा भी है। देयर आर 2 लड़कियां हैं हमारे पास, खुशबू एंड दुर्दाना। उन दोनों को 8वीं जमात पास करके जब गवर्नमेंट स्कूल में भेजा, बटमालू एंड सोवरा, वहीं से वो रहती थी, उन्होंने कहा ना ना हम कुछ नहीं कर सकते, हम हाजिरी तो यहाँ पर दे देंगे, आप वहीं पर जाइए। हमें कहा गया आप हाजिरी हमें इनकी दे दो, और 9th और 10th का आप इनको पढ़ा दो जैसे भी पढ़ा रहे हो, क्योंकि वो स्लो है ऑब्वियसली, आईक्यू उनको बहुत कम है। दे वर देन बिकॉज ऑफ द स्पेशल, तभी तो थे वो स्पेशल।
اب جب تک اس کو یا تو NGOs کو دے دو فنڈنگ اور ان کو کرنے دے دیجئے, یا اگر آپ کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے پھر آپ خود ہی بنا دیے جیسے آپ بنانے. unless we have bottom line special schools at every district اور جس لیول پر بھی وہ بنانا چاہیے separate, till then this problem will not be solved. I may just be allowed to conclude it in these words. Disability is seen as a development issue in any economy in the world except India, as the disabled group is often being marginalized due to exclusion from the society and thus leading to poverty. اس سلسلے میں an article in Hindu appeared in 6 March 2020. This was written by one former lecturer in sociology, Kulkarni, and another Raghav Gava. He is some professor from outside India. In this article, they highlighted disability and extremely poor. What is the relationship? I will just quote a few lines they mentioned. Ironically, the budget for 2020-21 is almost cruel to those experiencing persistent health deprivation by cutting the health outlay. گورنمنٹ کا یہ حالت ہے کہ انہوں نے ابھی کہا کہ 2011 کے ایکٹ میں ہمارے پاس 21, میں کہتا ہوں 21 کیا وہ 25 لائیں. رزلٹ کیا ہے؟ واٹ از دا فن؟ اگر ہم ان کو نہ پڑھا سکتے ہیں, نہ جاب دے سکتے ہیں, نہ ان کے لیے کوئی اورینٹیڈ کورس کر سکتے ہیں, جیسے ابھی اگر ہمارے ون آف یور پینلسٹ جو بارہمولہ کے ہیں ہمارے, یہ جو کہتے تھے کہ ڈاؤن اسٹروم کا ان کا بچہ ہے, I felt it. I would even suggest him, اگر وہ کسی طریقے سے ہمارے پاس لائیں, for us it's no problem. We will do our best at Voluntary Medcare Society Srinagar. Unfortunately, we do not have enough resources اس کو hostel facilities ہونے کے لیے. Here I may mention, Javed صاحب, کہ اس وقت for the last 2 years, organizations like ours who run on donations have dried up. اس کی اکانومی کی وجہ سے ان 2 سالوں میں. God forbid, ہم بہت سیریسلی اس بات پر سوچ رہے ہیں کہ شفقت کا یہ جو ہے اسپیشل اسکول ہمارے پاس, جسٹ اسپیشل اسکول آف 45 چلڈرن, we may have to close and imagine اگر ہم نے یہ بند کر دیا تو سوشو اکنامک اس کا امپیکٹ کیا ہو گیا, بچوں کا کیا ہوگا, پیرنٹس اگر وہ دونوں کما رہے ہیں تو ایک کو گھر پر بیٹھنا پڑے گا, اسٹاف جو لے آؤٹ ہوگا اس کا کیا اثر پڑے گا, just because we don't have enough money to run it. ہمارے وہاں پر انکلوسیو اسکول میں, just allow me to speak please, انکلوسیو اسکول میں جو بچے ہوتے ہیں they are better trained slightly, اور وہ جو ہے اسپیشل اسکول میں they are not, کیونکہ ان کے اتنی وہ لیول آف IQ نہیں ہے. ہمیں اسٹاف کہہ رہے ہیں, جسٹ اے مومنٹ, ہمیں اسٹاف کہہ رہی ہے ایک ہی بس میں ان کو گھر نہیں بٹھاؤ, کیونکہ ان کی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے میمکری کی. وہ بس میں ان سے پھر وہی سیکھتے ہیں جو ہم نے ان کو دن کو سکھایا ہوتا ہے, سو دے گو بیک ٹو اسکوائر ون. تو الگ الگ ٹرانسپورٹیشن. خورشید صاحب ایسا بالکل اللہ نہ کرے کہ آپ کا انسٹیٹیوشن بند ہو جائے. آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں, اور یہ بات ہماری یہ پروگرام جہاں تک بھی پہنچے, مجھے یقین اس بات کا ہے کہ سننے والے اور دیکھنے والے اس پروگرام سے کچھ آپ کے ساتھ رابطہ کر لیں گے, اور جو بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو جو بھی ہمارے ذریعے سے, آپ کے ذریعے سے, باقی لوگوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, اس قسم کے انسٹیٹیوشنز کو آگے لے جانے کے لیے مدد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں. خورشید صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ آئے. اگر آپ پروگرام چھوڑ کر جانا چاہیں گے تو بالکل آپ جا سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب پروفیسر رینا صاحب, ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ایسی باتیں آ گئی ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا, لیکن ایک بہت اہم بات جو ہر ایک پینلسٹ نے یہاں پہ کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسپیشل ایجوکیشن سکولز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. خورشید صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اسپیشل ایجوکیشن کو دے سکتے ہیں جب تک نہ ہمارے پاس وہ انسٹیٹیوشنز ہوں. آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بتائیے کہ جب تک یہ چیز نہیں آتی ہے تب تک کشمیر کی سوسائٹی کے اندر
किस किस्म के ऐसे स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि इस चीज की तरफ ध्यान दिया जाए? जनाब प्रोफेसर रैना साहब। देखिए जावेद साहब, मौजूद साहब ने अपने बेटे के बारे में कहा वो डाउन सिंड्रोम है, दैट कॉजेज फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंटल डिले। इस किस्म के जो मेंटल प्रॉब्लम्स वाले बच्चे हैं, सेरेब्रल पल्सी है, ऐसे डिसऑर्डर है which affects the person's ability to move and maintain balance and posture. इसी तरह डिसलेक्सिया के बच्चे ऐसे हैं जो रीडिंग में उनकी प्रॉब्लम होती है, they can't move their lips and they can't be aware of the phonological things. इसी तरह न्यूरोलॉजिकल जो डिफिकल्टी है, ऑटिज्म की बात है। मेरा ग्रैंड चाइल्ड खुद ऑटिज्म है, यहाँ एक स्पेशल स्कूल है जिसमें वो पढ़ता था। There were 93 children only having different disabilities and 110 was the staff, all specialist staff. इतनी बड़ी बिल्डिंग जो हमारा एसपी कॉलेज उससे ज्यादा एरिया था उसको। असल बात यह है हमारे पास ट्रेनिंग का जो ट्रेन स्टाफ है नहीं कश्मीर में, जो काम ये करते हैं इसके साथ पुलिस गिव मी टाइम टू टेल अबाउट व्हाट आई फील। द क्वेश्चन इज जितना कश्मीर में जो भी शख्स इस साथ काम करता है, जो नॉर्मल बच्चों के साथ टीचर है, वो तो चाहता ही नहीं, अगर वो चाहे भी किसी कमिटमेंट की वजह से ही हैज नो स्किल और वो बच्चे के साथ नाइंसाफी है। आप इलाज के लिए डॉक्टर के बदले किसी इंजीनियर के पास बच्चे को भेजते हैं, वो उसका प्रॉपर इलाज नहीं कर सकता है। यू नीड ट्रेनिंग द स्टाफ, यू मस्ट हैव ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स, यू मस्ट हैव स्पीच थेरेपिस्ट्स, you must have educational psychologists. There is not a single educational psychologist in the administration of education of Kashmir. You must have doctors committed for the children. और जब आप सर्वे करते हैं, सर्वे करना आसान है, इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है, इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है। यहाँ ब्रिटेन एजुकेटर्स एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन में अगर कोई बच्चा उसको टेलीफोन आता है और वो टेलीफोन नहीं सुन पा सकता है and he is not able to understand what the other person says, treat him as disabled. Help him to improve his hearing. बच्चे वहाँ physically disabled है, hearing impairment है और auditory impairment है और physically challenged है. Nothing has been done in inclusion. जो inclusion की बात सब हम करते हैं वहाँ कश्मीर की सिचुएशन में कि एक ही स्कूल में, एक ही स्कूल के एक ही छत के अंदर मुख्तलिफ डिसेबिलिटी वाले बच्चे रहें नॉर्मल बच्चों के साथ। ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है। ये बच्चे खासकर सिंड्रोम वाले, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी वाले, सेरेब्रल पल्सी वाले या विजुअल और ऑडिटरी वाले, ये मुमकिन नहीं है कि आप उनको नॉर्मल बच्चों के साथ रखें। लिहाजा पहली बात यह है कि दैट यू मस्ट एस्टेब्लिश स्पेशल स्कूल्स एट लीस्ट वन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, और वो बच्चे जो वहां आएंगे उनके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का इंतजाम होना चाहिए और उनके साथ ऐसे एस्कॉर्ट्स हों जो उनको ट्रीट करें लाइक देयर ओन चिल्ड्रन। एक बच्चा ऐसा है जिसकी फिजिकल डिसेबिलिटी है, गाड़ी में बिठाना है, गाड़ी से उतारना है, उसके लिए एक हमदर्द एस्कॉर्ट की जरूरत है। हमने यहाँ यूके में देखा है कितना तवज्जो इस पर दिया जाता है, कितने वो दूसरी बात है बच्चे प्रोग्रेस करेंगे न करें, दैट इज डिफरेंट, बट द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट। आई एम थिंकिंग, कल भी मैंने देखा, कल फेसबुक पर, प्लीज गिव मी टाइम, तो 16.5 करोड़ रुपया उन्होंने दिया स्पोर्ट्स किट के लिए सेंटर ने, और 28 करोड़ रुपया दिया स्मार्ट वो मेरे पास वो प्रोफेसर साहब मेरे पास वो एक सवाल है, उस पर हम बहस करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा। हम पैसा जाया करते हैं, हम पैसा लैप्स करते हैं, और इसलिए कि जैसे ये टाक साहब ने कहा, यूज जाए दजा तो तरह फिक्री, दोज पेरेंट्स नो हु हैव स्पेशल एजुकेशन नीड चिल्ड्रन, यू नो सम चिल्ड्रन आर वेरी डिसरप्टिव और पेरेंट्स की जिंदगी अजीरन और मुश्किल बनती है। उनका कसूर नहीं है। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था मिडिल स्कूल में, तो हमारे साथ क्लास फेलो था मेरा, वो टीचर जब बोलता था फिर सबसे पूछा, उससे पूछता था, वो बोलता नहीं, कुछ आंसर जवाब करेक्ट नहीं देता था, तो टीचर को थप्पड़ मारता था। वो बेचारा बेसिकली डेफ था, एंड टीचर हैड नेवर रियलाइज्ड दैट दिस बॉय हैज अ डिसेबिलिटी एंड ही शुड बी ट्रीटेड दैट वे। वहां जब आप सर्वे करते हैं,
आपको सर्वे करने के लिए भी एक्सपर्ट स्टाफ की जरूरत है। और जब आप सर्वे करके फॉरन साहब कहते हैं इस जिले में 500 बच्चे हैं, उनको फिर कैटेगराइज करना ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सिवियरली डिसेबल्ड है, कौन माइल्डली डिसेबल्ड है, कौन सिंड्रोम में है, कौन ऑटिस्टिक है, किसको हियरिंग इंप्रूवमेंट है, ये अलग अलग कैटेगरी बनाने की जरूरत है। और हर कैटेगरी को अपने सिंबल्स होते हैं, उसको समझने की जरूरत है। लेकिन वहां ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहता हूं कि एक बड़ा मरहला इसमें आता है एवेल्युएशन का, कि आपने सर्वे किया, 50 बच्चे इस इलाके में हैं, इनको एवेल्युएट करना है कि इनको किस किस्म की तालीम देनी। उस एवेल्युएशन के लिए आम टीचर नहीं कर सकता, डायरेक्टर एजुकेशन नहीं कर सकता, चीफ एजुकेशन ऑफिसर नहीं कर सकता है। यू नीड स्पेशल स्टाफ, यू मस्ट हैव टीम ऑफ एक्सपर्ट्स including psychologist, including a doctor, the parent, occupational therapist, health worker and care worker. ये सब लोग जब बैठेंगे, इसका हर तरफ से देखेंगे इसमें क्या डिफिकल्टीज है, इसको किस किस्म का करिकुलम चाहिए, क्योंकि every disabled child is a book in himself. You need to have IEP, हम यहाँ बोलते हैं individual educational plan. अगर वहां हम एक ग्रुप के लिए आप प्लान बनाते हैं, दैट्स ऑफ नो यूज। हर एक बच्चे की, अगर 2 ऑटिस्टिक बच्चे होंगे, उनमें भी फर्क है, किसी में ज्यादा है, किसी में सिंड्रोम ज्यादा है, किसी में सोशल इंटरेक्शन करने की सलाहियत है थोड़ी सी, किसी में नहीं है। लिहाजा हर एक बच्चे को इवन विद इन द सेम कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी यू हैव टू प्लान इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान फॉर एवरीबॉडी। और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड स्पेशल स्टाफ, You need an trained staff. इस सिलसिले मेरे एक तजवीज़ है स्टाफ की, क्योंकि it's not possible to rectify all the problems within a short period time. फिलहाल जितना हम पॉसिबल कर सकते हैं ट्रेनिंग में, जो SI है श्रीनगर में या डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, we should task them with the work. कुछ ट्रेनिंग का जिम्मेदारी वो लें और उनको वो रिसोर्स पर्सनल, उनको ट्रेन किया जाए, चाहे मुल्क के अंदर या बाहर, ताकि वो आम टीचरों को ट्रेन करे। और ये काम SI और DIs अपनी जिम्मेदारी ले। और जहाँ टीचर ट्रेनिंग करते हैं बीएड की या बाकी लोअर लेवल एलिमेंट्री लेवल की, उसमें उनके लिए 50 घंटे का एक कोर्स होना चाहिए। दैट शुड बी द कोर्स, फर्स्ट कोर्स इन द स्पेशल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ताकि बेसिक थिंग्स जो है उनको पता चले, थोड़ा सा आइडिया लगे। टीचर को, जो नॉर्मल टीचर है, आम टीचर है, उसको पता भी नहीं स्पेशल एजुकेशन कॉन्सेप्ट क्या है और ऐसे बच्चों का क्या मसला है, किस तरह उनको पढ़ाना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। और जो राणा साहब, प्रोफेसर राणा साहब, आपने जिन चीजों की तरफ निशानदेही की है, ये चीजें वहां पे होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि ये चीजें किस हद तक वहां पे मौजूद हैं। और उसके लिए मैं यहाँ पे ले आता हूँ जनाब मिस्टर शवर आनंद को। Shavar, can you hear me? Hello, Shavar, can you hear me? Yes, sir. Can you please repeat your question? Right. My question is very simple question. You heard Professor Rana that who said that what kind of facilities and what we should do in order to give some kind of relief to our disabled or differently abled children or the students. Now, my question is to you is that those things towards which Professor Rana brought us a little bit of knowledge about that, or you as a trainer or you as an educator, totally are you aware of those things? If yes, what kind of things you have been doing and how you have been monitoring that when Professor Rana talked about the evaluation. So those things towards Professor Rana pointed out, are we having any kind of that kind of provisions available and we are doing that or not? Yes, first of all, I totally agree with what Professor Raina has said, that it is very difficult to teach two children, one with disability and one without disability. But saying that, when we start teaching the students, when we start training them, उनको हम एक चीज सिखाते हैं that we don't use the term normal or abnormal while teaching the students. Why? Because we treat those children also as common, and we teach them, the first thing that is taught in B.Ed special program is that not to use the term normal,
because for them every student is equal. Okay. And as far as the things which were pointed out by Professor Raina, they are exactly correct, because it is very difficult to first of all have trained individuals who can administer the tests, who know exactly about what disability is, because to cater the needs of a child with disability, one should itself know what disability is. If you don't have the knowledge about what disability is, हमें यही नहीं पता कि disability क्या है, हमारे पास एक बच्चा आया है, उसे ऑटिज्म है, बस हमें पता ही नहीं है कि ऑटिज्म क्या होता है, तो हम उस बच्चे की डिसेबिलिटी को, डिफिकल्टीज को केटर नहीं कर पाएंगे. इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द टीचर. So that is where what we teach is कि you should know, firstly you should understand what the child's problem is. That is, firstly, जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, the first and foremost rule is of rapport formation. That is कि आपको बच्चे के साथ एक rapport form करना है. You should understand what the child's problem is. And it is correct that all the speakers who have said that infrastructurally हमारे पास available नहीं है, availability नहीं है चीजों की, but those things will come as if we have the will. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम हिस्ट्री की बात करते हैं, अगर पहले के टाइम से लेके अब के टाइम पे, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत इम्प्रूवमेंट है, बट मार्जिनली वी हैव इम्प्रूव्ड in terms of letting the children with disabilities, the persons with disabilities coming forward. We have as a society become a little more open towards them. हम उन्हें भी राइट्स दे रहे हैं कि वो भी आगे बाहर आके they should also achieve things, जैसे कि पहले नहीं था. So what I want to say is कि yes, I totally agree with what Professor Raina has said कि infrastructurally, policy wise हमें बहुत चीजें चाहिए that should be improved. Yeah, so Professor Sharab, the things which Professor Raina said, that we should have experts, we should have doctors, we should have physiotherapists, we should have speech therapists, occupational therapists, these things. The simple question: do we have such a structure in place or not, or we have to prepare it from the scratch? हमें ये बनाना है या हमारे पास है? Sir, see, if you only talk about Jammu and Kashmir, तो वहाँ पे तो sir we have to start from scratch. Okay. But if you talk about metro cities like Delhi, Mumbai, and other, there the structure is there, and they have even started preparing those. Like if I talk about Delhi, here we have institutes, we have colleges who are preparing professionals for becoming physiotherapists, occupational therapists, psychologists. They are teaching those individuals and training them so that in future they become and they are focused on only one area. That is, be it occupational therapist or a speech therapist or even a physiotherapist. So when there are things which are going on if I talk about in Delhi, there are dedicated centers for it. There are dedicated institutes which are training individuals to become trained and be professionally stable. But as far as Jammu and Kashmir is concerned, we have to start from the scratch. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. We have to start from scratch. We have Thank you very much, Mr. Sharab. I have a question for every panelist, and after getting your opinion on that question, we may wind up the program. My question is towards what Professor Raina just now gave a hint towards it. आप सबों को मालूम होगा, जितने भी मेरे यहाँ पे लर्नर पैनलिस्ट्स हैं, कि दैट इन 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन डिपार्टमेंट J&K के एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 2 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दे दिया. In 2 installments. The first installment was 16.5 crore rupees for purchasing the support kits for schools. Good. ये था एक. Now second installment was 28 crore rupees. Of this 28 crore rupees was for making the classrooms smart classrooms.
कंप्यूटर हो, स्मार्ट बोर्ड हो, चेयर्स हो, बाकी चीजें, 28 crore rupees were given. The irony is, till now, not even single penny has been spent. एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है. अब मेरा सवाल आप पैनलिस्ट से यह है कि अगर इस चीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा दिया, क्या वजह है कि यह पैसा खर्च नहीं हुआ और स्पेशल एजुकेशन जो स्क्रैच से शुरू करनी है उसके लिए पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, खर्च नहीं हुआ? क्या ये हमारे inefficient bureaucrats from top to bottom or corrupt politicians, the corrupt politicians, क्या ये उनका कसूर है? अगर आप समझते हैं कि ये उनका कसूर है तो बहैसियत एक सिविल सोसाइटी के मेंबर से आप से हम क्या तवक्का रखेंगे? This question is to every panelist, and my first answer I would like to take from Mr. Javed Taq. जनाब टाक साहब, आप इस सवाल का जवाब दें. टाक साहब, hello, can you hear me? जनाब टाक साहब, आप अच्छा टाक साहब, आप अनम्यूट हो गए थे. जनाब प्रोफेसर गनाई साहब, आप हैं उधर? आर यू देयर? कैन यू हियर मी सर? हेलो प्रोफेसर Javed, did you hear my question? Yes sir, I heard your question. Can you hear me? Yes, I can hear you. Can you please answer that? I think there should be some technical issues with this. Otherwise, ऐसा भी नहीं है कि कोई ब्यूरोक्रेट पैसा नहीं खर्च करेगा. कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अगर फिर ऐसा है, मे बी कोविड की वजह से या कुछ ऐसा हो जहाँ पे बहुत सारा एक लॉन्ग टेन्योर हुआ कि जिसमें हमने कोई काम ही नहीं कर पाए, तो ऐसा भी हो सकता है. बट एज अ सिविल सोसाइटी मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आई विल फाइल एन RTI and I will give you the answer within 10-15 days. Maybe I get the answer, or I will use my own network to see what has happened from civil sector to the directorate level. Why has not such a good opportunity been cashed by the bureaucrats and other concerned people? लेकिन ऐसा भी है कि कुछ चीजें हो जाती है लैब्स के ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर पाते. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं. हमारे लिए जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं या ऑर्थोपेडिक डिसेबल्ड बच्चे होते हैं जिनकी अपर लिम्ब डिसेबिलिटीज होती है, दे नीड स्क्राइब और एमिनिसिस इन द एग्जाम. तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स व्हाट दे से, मैं खुद पिछले साल बोर्ड पे गया 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, एंड I talked them that I need almost 10 of my students need the scribe or eminences, and even they assured me that everything will be done. ये हमारा फर्ज है, हमारे पास है. लेकिन फिर वही हुआ कि सारे बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे थे और कल एग्जाम था, और हमारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो बच्चे पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, वो बिल्कुल एग्जाम सुबह था, आज शाम तक वो बोर्ड पे चक्कर मार रहे थे कि हमारा स्क्राइब कौन रहेगा. वो यही बोल रहे थे, they have linked a stereotype with the children that they cannot perform, और ये स्क्राइब ले ले इसीलिए कि they need somebody's help. Right, बच्चा एश्योर कर रहा है. तो ये ऐसे भी प्रॉब्लम्स है कि जहाँ पे बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया. ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जहाँ पे फंड्स लैप्स हो जाते हैं. लेकिन एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए पेरेंट, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें पता होना चाहिए कि क्या वजूहात हैं. अब कोविड एक वजह हो सकती है, लेकिन इस कोविड के दौरान अब हजारों मील दूर बैठकर हम आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं हो सकती है. खैर, आपकी बात आ गई है. जनाब
प्रोफेसर गनाई साहब, आपने मेरा सवाल तो सुना होगा, बिल्कुल आप इस पे जरा रोशनी डालिए कि क्या वजूहात हो सकती है और आप बहैसियत एक सिविल सोसाइटी के मेंबर से आपकी क्या जिम्मेदारी है? जनाब, मेरा इसमें यही कहना है, नो डाउट देयर वाज 5th August also in case of J&K, and we see turmoil was for a long time, and then above all COVID factor. No doubt these things would have caused it, basically non-spending of money, of course. But in case of J&K, let me tell you frankly, from 80s onwards, we are facing governance deficit. No accountability. And you see, neither political elite nor bureaucracy. And being a student of the national movement, let me tell you very confidently that it is always the political elite of stature that has made the bureaucracy to toe the line throughout the history of post-independent India. So here we see political elite is investing in land, raising assets. They have no and you see, there is also from society in Kashmiri, there is a proverb, Halan Banan Bukil Khan. Right. And our people also vote for parties, not for the candidates. They don't see the credentials and track record of the politician. So problem again lies in the society. Yahan badalta nahi zaman. So we are facing since long, those our leaders, whether Sheikh Abdullah, Bakshi Sahab, Sadiq Sahab, Mir Kachi, they had been associated with a movement. And for them, politics was public service above all. But from 80s onwards, let me tell you frankly, we have practically political crisis. We have no leaders. Right. ये political बात हम करेंगे किसी वक्त, वो सही थे गलत थे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बहैसियत एक सिविल सोसाइटी के मेंबर के आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि ये जो फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिए, एक पेनी खर्च नहीं हुई, क्या ये हमारी ब्यूरोक्रेसी की इनकॉम्पिटेंसी और पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिटिकल लीडर्स का करप्ट होना साबित नहीं करता? Of course, my submission is basically it could have happened because of the pandemic factor, turmoil factor. That is one part. But biggest part is governance deficit in the Union Territory of J&K. Right, sir. So it is. I believe that is largely responsible for non-spending of, and it has not happened for the first time. We see we are our bureaucracy, our political elite has not been able throughout in Kashmir to utilize funds, and we are not only turmoil, but governance deficit is the root cause of turmoil over here. Your point taken, sir. Your point taken, sir. It is the question of the governance. Anzar Mauju, as a parent, same question to you as a parent. What do you think? That as a parent and as a member and as a journalist, a member of civil society and a member of Down syndrome organization, what do you think? What is your responsibility that why this money has not been spent? और मैं आपको आप जवाब देने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये बात भी बताना चाहूँगा that I tried my best from the last 1 week to call Commissioner Secretary Education or the Director Education. I was not able to get connected with them and they refused to come into my program. तो आप क्या कहेंगे जनाब? मैं टाक साहब की बात से बहुत ही सहमत हूं कि जो ये आर्टिकल 370 की वजह से और जो ये पेंडेमिक चल रहा था, लॉकडाउन वगैरह था, वरना हमारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए तो ये चांदी थी, तो वो इस पैसे को बिल्कुल यूटिलाइज करती, क्योंकि उनमें उनको बहुत सारे फायदे है इसमें।
کیا کیا تھا دوبارہ کیا کہتا ان کو کیا ہوتا؟ ان کو تو اپنے فائدے بھی ہے اس میں, ان کو تو نقصان ہو گیا اس چیز سے, خود کا نقصان. اچھا دوسرے تو پھر اپنا شیئر اپنے شیئر کا نقصان تو ہوا ہی ہے ان کو, ورنہ وہ اس کو یوٹیلائز کرتے. جو ٹیکنیکلی جو ہے یہ جو پینڈیمک کی وجہ سے اور دوسری جو ٹرمائل وغیرہ چل رہا تھا, لیکن میں آپ کو ایشور کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے, کل ہی میں ایک سٹوری فائل کروں گا اس کو, جس سے میں کمشنر سیکرٹری صاحب سے اس چیز کا ورژن لوں گا کہ آیا کہ وہ جو رقم جو ہے اس کو خرچ کیوں نہیں کیا گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ میں لے لوں گا محترمہ شفقت گیلانی صاحبہ, آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں تو بتا دیجیے گا. جی میرے خیال سے شاید لیک آف اویئرنیس کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے جب تک کہ ہم پیرنٹس, کیونکہ ڈسیبلٹیز اتنی زیادہ ہے اور اتنی الگ الگ طرح کی ہے, جب تک ہم پیرنٹس آپس میں ہاتھ نہ جوڑے اور مل کر پھر ایک پیٹیشن یا جو بھی ہے اپنی اپلیکیشن کنسرن اتھارٹیز تک پہنچائے, تو تب جا کے وہ شاید ہمارے حق میں کوئی فیصلہ دے. تو جب میں اپنے ادارے کے حوالے سے کہوں گی کہ جب میں نے شروعات کی تھی میرے ساتھ 14 پیرنٹس جڑے تھے, لیکن سب اسی خدشے کے ساتھ کہ پتہ نہیں 1-2 مہینے کے بعد کلوز تو نہیں ہوگا, پتہ نہیں ہم جو پیسے انویسٹ کریں گے یہ ضائع تو نہیں ہوں گے, کون سنے گا ہماری, کیا مطلب اتنا میں ڈسکریج ہوئی. لیکن میں نے یہ سٹیپ لیا اپنی پرسنل سیونگ سے, اور جو میری فرسٹ فیملی ہے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اس میں, اور الحمدللہ میں نے کنٹینیو کیا. لیکن بات وہی ہوتی کہ ایک اکیلا انسان وہ چینج یا ریولیوشن نہیں لا سکتا ہے, آئے گا انشاءاللہ, لیکن مے بی اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اور اگر ہم ایک ساتھ ملتے تو مجھے لگتا ہے ایسے فنڈز شاید چینلائز ہوں گے, لیکن جب ہم ایک ٹھوس طریقے سے اپنا مدعا سامنے رکھیں گے گورنمنٹ کے. بہت بہت شکریہ. جاوید صاحب آپ نے مجھے میوٹ کیا ہے. Is it possible that you mute me? I just would like to put a word. اوکے سر یو آر, میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ چلے گئے ہیں, چلیں آپ, یو آر ان میوٹڈ سر. Thank you. Can I give a word about from as a bureaucrat? میں تو آپ سے پوچھنے جا رہا تھا کہ آپ ایک بیوروکریٹ رہے ہیں, آپ ذرا بتائیے کہ کیا ہو گیا ہے ان فنڈز کو. میں آپ سے بتاؤں گا, اس لیے I have observed it. Couple of reasons ہوتے ہیں اس میں. During as a state اس وقت جو politicians ہوا کرتے تھے, جو سینٹرل اسکیمز کا پیسہ آتا تھا, they would چونکہ اپنا کوئی ریونیو نہیں ہوتا تھا, they would deliberately keep it in JK bank to earn some interest so that interest is utilized for some other works. Okay, here میں جو دیکھ رہا ہوں, یہ جو ریزن بتا رہے ہیں سارے پینلسٹ, کووڈ کا یا دوسرے وہ جو پہلے ہوا تھا اگست 2019 کا, I don't think that's the reason. کیوں نہیں؟ اس وقت یا جو ان کا جو آپ دیکھ رہے ہیں, I collected it from reliable sources, پے جو نکلا ہے ان دو سالوں میں, that is by reappropriation of from other components. مطلب پے تک نہیں ریلیز ہوئی ہے. جو یہ فرام ریسورسز ٹو ڈاؤن بلو جتنے بھی فنکشنر ہیں ان کا پے has been drawn by reappropriation. اس کا obviously director is not capable. ان کی sorry, he is not the authority. اس کے لیے اس کو واپس جانا پڑا ہوگا سیکریٹریٹ, وہاں سے reappropriation کرانی پڑی ہوگی, then only he could draw this money by from the other components. دوسری ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے, اس میں آپ نے بتایا this was for resources کے لیے اپ گریڈ کرنا اور وہ اپلائنس لینے کے لیے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہے جس میں خرید و فروخت ہوتی ہے. اب جن ڈپارٹمنٹس میں یو ہیو جن ورکس کے لیے آپ کنٹرول آف 2 ڈپارٹمنٹس, یہاں 2 ڈپارٹمنٹس آتے ہیں. ایک تو ڈائریکٹوریٹ آف یہ جو ہے اس کا SSA کا جو بیٹھا ہے اس کے پاس, پھر امپلیمنٹنگ ایجنسی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. امپلیمنٹنگ ایجنسی ول آلویز ہے کہ ہمیں پیسے نہیں دیے گئے, اور وہ جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ کہے گا نہیں جی ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں. اگر اس کا جو آپ نے کہا نا دس منی ہیز ناٹ بین یوٹیلائزڈ, ٹرو, اس میں 2-3 کام ہوئے. اس میں ایک کام پر میں نے دیکھا ایلیمکو سے خریدے گئے ہیں سم اپلائنسز. If you see that all districts in Jammu, they have been provided these aids and appliances. In Kashmir, Pulwama has been given. No other district.
जबकि बारामूला में सबसे ज्यादा थे डिसेबल्ड, उनको कोई भी एड नहीं दिया गया, नथिंग। तो जहां कंट्रोल 2 डिपार्टमेंट्स का होता है, देयर इज अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, और वहां पर ऊपर जो सेक्रेटरी लेवल है, अगर वहां पर उनके फॉर सम रीजन दे नीड मनी फॉर सम अदर डिपार्टमेंट, दे मे हैव रीअप्रोप्रिएट वहीं पर दूसरे कामों के लिए लगाया होगा और नीचे नहीं दिया होगा कोर्स, वरना पैसा कैसे ये मुमकिन है कि ये पे तक भी रीअप्रोप्रिएट कर ले। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद साहब कि आपने हमें ब्यूरोक्रेटिक वे ऑफ अप्रोच जो इसका है किस तरह से खर्च करते हैं, लेकिन आज तक मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि पैसा खर्च करना है फलाह के लिए, बहबूद के लिए, उसमें इतने हर्डल्स क्यों आते हैं। आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड इट। खैर, प्रोफेसर रैना से इस बारे में पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। जनाब रैना साहब। देखिए, ये पहली बात मैं ये बताऊंगा, ये शफकत जी ने एक डिसेबल के बारे में बात की। Our problem is we have to sensitize the society. We have to develop attitudes in favor of the disabled people. Unfortunately, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, either they are unaware about what are the problems and what is their due in the society, what are their rights, या तो वो जानबूझकर इसे मुंह चढ़ाते हैं। As in our discussion, एक खुर्शीद साहब ने बताया कि teachers are reluctant to take in the schools those children who have mental disabilities. There are some genuine reasons also. If a child is disruptive, he may disrupt the class. मैं कहता हूँ even in inclusion and integration, there should be separate units under the same roof, so that people of the same disability are taken up separately. But again, that's the problem, as I said in the beginning, we don't have sufficient क्या at all. We don't have a specialist staff in any school, in any district. Now, खुर्शीद साहब ने कहा कि बारामूला में 496 बच्चे हैं और किसी रिसोर्स सेंटर पर वो कभी उनको लेते हैं। अब बात यह है कि उनको कब टाइम आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या होगा। The question is, we have first equipped the department with the trained people for different disabilities, and we have to evaluate the children individually and understand their special needs, and then alone we can meet those needs after preparing their individual education plan. And it's not like common children. You need a different methodology of teaching, different way of evaluating those children. एक बच्चा एक साल में सिर्फ एक लफ्ज सीखता है. You can't equate him with a child जिसने 8वीं बात पास किया है. So you need to have a lot of patience. और जो टीचर इसमें काम करते हैं वो एक इबादत करते हैं. मैंने यूके में भी देखा है, टीचर गेट टायर्ड कि जब बच्चा एक साल में कुछ काम नहीं करता है और पेरेंट्स शिकायत करते रहते हैं मेरा बच्चा वही है. मैं खुद जब जाता था मीटिंग में अपने ग्रैंडसन के लिए, I would talk to the head teacher. Roman has not progressed well in this thing. We are trying at home also. और she would tell me कि वो मुझे एक दफा बताई कि ये चीजें तुम करो घर पर, तो मैंने घर पर की. And I found she was right, because some children do not make much progress and parents do not appreciate the work of teachers. Teachers and the staff who work with special needs children, वो दरवेश सिफत आदमी होने चाहिए. आपका ड्राइवर भी जो है उसको भी हमदर्दी होनी चाहिए. जो एस्कॉर्ट है बस में उसको भी हमदर्दी होनी चाहिए. इनको प्यार मोहब्बत से गाड़ी से उतारना है, प्यार मोहब्बत से उतारो, ये नहीं जो धक्का मारो नीचे उतरो. तो यहाँ एक बात है, जहां आपसे मस्ट फंड्स की बात आपने की, मे बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज allocated money from time to time for special education, and that amount has met the same treatment which you just identified 2 items for youth skate sports kits and smart rooms. असल बात यह है कि right from beginning there has been patronage for the bureaucracy who have been corrupt, who have been inactive, who have been incompetent in their work. Why is it a leave case is handled in the department for 6 months? Why is it a petty issue is not settled? If you remember, when we had program on Taftiri Tawalat, और आपको बताया गया किस तरह वो इंटरप्रेन्योर्स हमारे जवान जाते हैं और 6-6 महीने उनको एक-एक कागज मांगते हैं. जब तक अगर वो पहले 10,000 रुपए टेबल पर रखेंगे तो उसी दिन सब कम होता है. Corruption. Yes. They are incompetent. प्रोफेसर साहब, इस पे हम बात कर लेंगे और एक बाजार प्रोग्राम इस पे कर लेंगे. मैं
आखिर पे इस प्रोग्राम के हवाले से आप तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ ले आए, आपने अपने ख्यालात का इजहार यहाँ पे किया, और एक ऐसे मौजू पे आज हमने बात की जो हमारी सोसाइटी ही नहीं बल्कि हर एक सोसाइटी के लिए इतना ही अहम मौजू है जितना हमारे लिए खाना पीना जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि इस मौजू के हवाले से हम न सिर्फ हुकूमत का तो काम होता है कि उनको काम करना है, हुकूमतें उसी लिए होती हैं कि उन्हें वो करना है, लेकिन सिविल सोसाइटी की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए हमें काम करना है, हमें हुकूमत वक्त से, हमें उन ब्यूरोक्रेट से, हमें उन पॉलिटिशियन से ये बात कहनी है कि ये जो सेक्ट है जो टोटली नेग्लेक्ट हो गया है, और जिसको नेग्लेक्ट होने की जिम्मेदारी जो है हम पर भी है, आप पर भी है, उसको किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, सस्टेन किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है, उस चीज की तरफ हमें जरूरत है ध्यान देने की। आप तमाम हजरात का मैं एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ लाए, इस प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार किया। किसी और प्रोग्राम में आपके साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दे दीजिए। आप अपना ख्याल रखें, अपने गिरद नवा का ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर।